ठीक है। तो नमस्कार जाओ, सभी। नमस्ते। नमस्कार भाई लोगों। नमस्कार सभी दर्शकों को। नमस्कार जय दादा, एम दादा, वीवी दादा और सभी दर्शकों को, बड़े और छोटों को। आज हम ब्लंडर्स ऑफ नेहरू पार्ट 5 लेके आए हैं और जो है बिना टाइम वेस्ट करे हुए स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि थोड़ा लेंदी हो जाता है, इसलिए स्पीड से स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट आज मैं ही करने जा रहा हूँ। अच्छा, द हिमालयन ब्लंडर से स्टार्ट है ना आज? ठीक है। Blunder number 36, the Himalayan blunder, India-China war. Again and again, military men have seen themselves hurled into war by the ambition, passions, and blunders of civilian governments, almost wholly uninformed as to the limits of their military potential and almost recklessly indifferent to the military requirements of the war they let loose. Alfred Alfred Watts, The History of Militarism. India and China had a record going back thousands of years for never having fought a war between them. Nehru thought his unwise and ill-considered politics broke the record. Though unwillingly, Nehru's forward policy and his failure in settling the borders resulted in India-China war and its consequent human and financial loss. Besides loss of face for India and Indians before the international community, here we are talking of what India could control, not what China had in mind. Summarizing Himalayan blunders. It was not just one Himalayan blunder, but like the Himalayan range, a range of blunders by Nehru over a 15-year period since independence across domains, external security, defense, foreign policy, and so on, that led to a disaster that shamed India and the Indians before the world. The same are summarized below, following by coverage of some of them in detail. Blunder number 1, allowing Tibet to be annexed by China and recognizing China's claim over Tibet, and allowed Tibet-India border to become India-China borders, bringing with them all the associated problems. Blunder number 33 above. Blunder 2, not settling the border issue with China and being flexible about it. Blunder number 35. Blunder 3, signing Panchsheel agreement with China in 1954 without first settling the borders. Blunder 34. Blunder 4, change of Indian maps unilaterally after July 1954 without mutual discussion with the other party, China. Blunder 35. Blunder 5, Nehru's refusal to consider the proposal of the Chinese delegation in 1960 of East-West give and take swap on the McMahon line and Aksai-Chin. Blunder 35. Blunder 6. 3. Yeah, ill-convinced, non-forward looking Inconceived, हाँ, ill-conceived, ill-conceived, non-forward looking forward policy of establishing indefensible border posts in the disputed areas, provoking China off or giving China the excuse to attack. Details further down. Blunder 7, absurd assumption on the part of Nehru and his close group that China would not attack even if India established certain posts in the disputed areas. And the details further down. Blunder 8, leaving the forward post grossly undermanned and underarmed, with
Inadequate logistics in place. Details further down. Blunder 9. Politicization of the army high command. Favoritism, putting in place sycophants Psychopath. and sycophants and submissive officers at top positions would who would noto the Kowtow. political Kowtow. Kato who would kato the political bosses. Eventually, some of these chosen submissive officers contributed to the humiliation of India. Blunder 38. Blunder 10. Gross neglect of defense and external security. Blunder 37. Blunder 11. Appointing the insufferability, arrogant and incompetent Protege Krishna Menon as defense minister. Blunder 38, 73. Blunder 12. Nehru's indiscretion of publicity declaring on 12th October 1962, barely 8 days before the war started, that he had instructed the army to evict the Chinese. Does one give operational orders publicly? Does one give operational orders publicly? Wars are meant to be waged silently and anonymously. Mature nations and mature leaders are not expected to indulge in empty bluffs. There was no worthwhile plan to either evict the Chinese or to resist them if they attack. If they attack. Details further down. Blunder 13. After mere 4 days of fighting, during which the damage had not been too much, China offered a ceasefire on 24th October 1962, suggesting withdrawal by 20 kilometers by both the sides from the line of actual control, followed by talks and negotiated settlements on the border dispute. Nehru didn't agree. India's major humiliation in the war happened later, after 14 November 1962. That could have been avoided had India taken up the Chinese offer. Details further down. Blunder 14. On 21st November 1962, China declared unilateral ceasefire and offered the same terms it offered on 24th October 1962 and again suggested talks, discussions, joint ground survey and negotiated settlement. India agreed for ceasefire but did not take up the offer for talks. It was worth resolving the dispute. Details further down. Blunder 15. Nehru should have done whatever it took to amicably settle the border dispute with China and should not have left it open for the generations to follow, like he did for Kashmir. Because with the passage of time, as China became stronger and stronger, settlement became difficult. Blunder 35. Blunder 16. Nehru should have set up a fully empowered commission for a comprehensive inquiry into all aspects of the debacle with a mandate to recommended action against the negligent and the guilty and suggestions for the steps to be taken going forward. The findings should have been made public. That was the maximum expected of a democratic country. Minimum expected. That was the Minimum minimum. expected. That was the minimum expected of a democratic country. But nothing of the sort was done. Blunder 41. Blunder 17. Nehru should have resigned in the aftermath of the rot. Not just offered to resign. The offer he didn't make anyway. He should have actually resigned or should have been made to resign. Democratic norms demanded it. It would have been a good lesson for the future politics of India. You can't do a series of major blunders yet to continue in power, not just as a lesson but also on account of its beneficial effects. Had he resigned, another competent person, and there were many, who would not have carried Nehru's baggage, would have looked at the issue afresh and reached a permanent settlement on the borders with China. Blunder 42. Ill-conceived forward policy. With Nehru Krishna Menon deciding to unilaterally
fix India's border with China, India went ahead with its plan of physical presence on the frontiers. It began building forward checkposts under its harebrained forward policy, which was actually a bluff, masquerading as a military strategy. Their locations were as per the border unilaterally determined by India and not as per the mutual discussions or agreement with China. There was therefore a possibility of China's objection and even Chinese action to demolish the posts. The fact was that the boundaries were not settled. So, what was, say, within Indian boundary for India? Many have been within Chinese boundary for India, for Chinese boundary for China. If you had not settled the boundaries, controversies were bound to arise. Blunder 35. But rather than negotiating a boundary with China and reaching a peaceful settlement, Nehru, Anand and company, in their wisdom, their forward policy, convinced themselves that it is they who would determine the boundary, and in token thereof, establish their posts like markers that China could object and then attack and demolish those posts and even move forward into India did not seem to them a possibility. Why? Because reason Nehru, any such reckless action by China would lead to world war, and China would not participate such a thing. Precipitate. China would not precipitate such a thing. That's what they were themselves doing was also reckless. Did not apparently strike the wise men. इसके मतलब यह हुआ that Nehru was relying too much on USSR. वर्डवार बोल रहा है ना? हाँ, कि कोई आके बचाएगा। जी दादा। रसिया आके बचा लेगा मेरे को। ये इसके दिमाग में रहा होगा शायद। दादा बैकग्राउंड नॉइज आ रही है मेरे में। बैंड बज रहा है। तुम्हारा? नहीं, कोई आसपास पता नहीं किस चीज का बज रहा है। मैं पढ़ूं? आ रही है क्या आवाज? हाँ आ रही है। पीछे से आवाज नहीं आ रही? बैंड की आवाज नहीं आ रही भाई? मेरे को तो नहीं आ रही। ठीक है, कुछ ठीक है, फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। The decision on the forward policy was reportedly taken at the PMO on 2nd November 1961 in a meeting attended by Nehru, Krishna Menon, General P.S. Thapar, Chief of Army Staff, Lieutenant General B.M. Kaul, Chief of General Staff, P.N. Malik, Director IB, Investigation Bureau, Brigadier D.K. Palit, and the then Foreign Secretary, wrote Kuldeep Nair in Beyond the Lines. Nehru ordered that police checkposts be established to register India's presence in the Ladakh area. As many as 64 posts were built, but they were not tenable. आवाज आ रही होगी दादा क्या? हाँ ठीक है, बंद करो हम पढ़ते हैं। अच्छा मैं पढ़ता हूँ। आवाज आ रही है। Wrote Kuldeep Nair in Beyond the Line. Nehru ordered that police checkposts be established to register India's presence in the Ladakh area. As many as 64 posts were built, but they were not tenable. Home Secretary Jha told me that it was the bright idea of P.N. Malik, the Director of Intelligence, to set up police posts wherever we could, even behind the Chinese lines, in order to sustain our claim on the territory. This was Nehru's forward policy. But then Jha said, Malik does not realize that these isolated posts with no support from the rear would fall like 9 pins if there was a push from the Chinese side. We have unnecessarily exposed the policemen, Assam rifles, to death. He went on to say, frankly, this is the job of the army, but as it has been refused to man the police posts until full logistical support is provided, New Delhi has pushed the police. Arun Shori quotes Nehru in, are we deceiving ourselves again? It is completely impracticable for the Chinese government to think of anything in the nature of invasion of India. Therefore, I rule it out. It is necessary that the system of checkposts should be spread along this entire frontier, more especially
we should have checkposts in such places as might be considered disputed areas. As Lemchok is considered by the Chinese as a disputed territory, we should locate a checkpost there. So also at Chang Chokla. थोड़ा सा उठाना होगा. ठीक है दादा, आवाज चलेगी बैकग्राउंड से. China seemed to have viewed India's forward policy as a deliberate attempt to usurp the Chinese territory. Usurp. Usurp हो गया, ठीक है. Usurp Chinese territory and provoke war. Usurp. ठीक है, चलिए. As things stood, China was suspicious of India's intentions, wrote Rustamji. Nehru's mistake was that he did not accept or realize how our forward policy was being received in China. Several analysts, including Neville Maxwell, are of the opinion that Nehru's ill-conceived forward policy that was rolled out December 1961 onwards was at the root of the 1962 India-China war. इस सेंटेंस को हाईलाइट कर दो, इस सेंटेंस को हाईलाइट करो. पूरे सेंटेंस को हाईलाइट करो. Several analysts, including Neville Maxwell, are of the opinion that Nehru's ill-conceived forward policy that was rolled out December 1961 onwards was at the root of the 1962 India-China war. ठीक है, ये बहुत बड़ा वो का रीजन था 1962 वॉर का. ठीक है. Mao commented on Nehru's forward policy with one of his epigrams. A person sleeping in a comfortable bed is not easily aroused by someone else snoring, commented Mao. Since Nehru sticks his head out and insists on us fighting him, for us not to fight with him would not be friendly enough. Courtesy, emphasis, reciprocity. बहुत अच्छा जूता मारा. ये हेनरी किसिंजर ऑफ चाइना, वहाँ से कोट है ये हेनरी किसिंजर लिख रहा है चाइना. Courtesy, emphasizes reciprocity. सर मैं किसी को थप्पड़ मारूं तो courtesy demands that he should also give me a slap. Courtesy demands that he should also give me a slap. Stunning slap. ये होते हैं लीडर्स. जैसे माओ की जो पॉलिसीज थी गलत थी, ठीक थी, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन उसका विजन था. 48 में मैंने रोल्ड इन, उसका विजन था कि मुझे क्या करना है. तिब्बत हड़पना है, मंगोलिया को इतना हड़पना है, ये करना है, शिनजियांग. ये होते हैं लीडर. और हमारे चाचा साहब हिंदी चीनी भाई जो भी था, मतलब गलत डिसीजन था, सही डिसीजन था, क्लैरिटी थी, लेकिन क्या मुझे करना ये है. बाकी कोई अच्छा डिसीजन नहीं था, बट जो भी था एक क्लैरिटी थी. वो जो भी करना चाहता था उसमें क्लियर था वो. बिल्कुल. आगे वाला क्या लिख रहा है? Since Nehru stick his head out and insist on us fighting him, भाई वो उसी जगह एक दोस्त लड़ने को तैयार बैठा तो हम लड़ेंगे भाई, दोस्ती के लिए लड़ेंगे तो है. No preparation, yet orders to throw out the Chinese. In response to a reporter's query, Nehru grandly declared at the airport on 12th October 1962 on his way to Ceylon, yani Sri Lanka, that he had already ordered the armed forces to clear the Chinese from the Nefa, northeastern frontier. Confirming the above, on October 14, Indian Defence Minister V.K. Krishna Menon told a meeting of Congress workers at Bangalore that the government had come to a final decision to drive out the Chinese. He declared that the Indian Army was determined to fight the Chinese to the last man. In its jingoism, the press lapped up the comment. Wrote the statesman, Mr. Nehru has told the country that the armed forces have been ordered to throw the Chinese aggressions out of the Nefa, and that until Indian territory is that area is cleared from them, there can be no talks with China. Nefa
मतलब ये कह रहा and that until Indian territory in that area is cleared of them, there can be no talks with China. There can't be कर देता. Even foreign newspapers reported it. Some handling the news to the headlining. The foreign Some headlining news. newspapers reported some headlining the news to the effect that Nehru had declared war on China. The New York Herald Tribune headed its editorial, Nehru declared war on China. The Chinese People Daily also reported it, advising Nehru to pull back from the brink of the precipice and don't use the lives of Indian troops as stakes in your gamble. Question. The question is, तरफ खड़े थे ना, हाँ, बोल रहा है कि खाई की तरफ खड़े मत रहिए, हट जाइए वहां से. the question is, does one give operational orders publicly? It amounted to declaring war and giving China the excuse to retaliate. Wars are meant to be waged silently and anonymously. Mature nations and mature leaders are not expected to indulge in empty bluffs. There was no worthwhile plan to either evict the Chinese or to resist them if they attacked. With the AHQ dumbfounded at Nehru's surprise, Army headquarters. dumbfounded. With the army headquarters dumbfounded at Nehru's surprise, threw out orders. General Thapa rushed to the Defense Minister Krishna Menon and pointed out the orders were contrary to what was mutually agreed, not to attack or engage the Chinese. Responded Menon, unconcerned. This is a political statement. It means action can be taken in 10 days or 100 days or 1,000 days. Oh shit. Oh. Commented Mao. Since Nehru sticks his head out and insists on us fighting him. For us not to fight with him would not be proper. Courtesy, emphasis, reciprocity. Emphasizes. Courtesy emphasizes reciprocity. उसने कहा हमारा दोस्त लड़ने के लिए बोल रहा भाई लड़ना तो पड़ेगा. क्या दादा है. क्या उंगली कर रहा था उसको बार बार. क्या तमाशा. बात भी नहीं कर रहा था, उंगली भी कर रहा है. वाह. Responded Zhao Enlai, we don't want a war with India. We have always strove in the direction of avoiding war. We wanted India to be like Nepal, Burma or Mongolia, that is solve border problems with them in a friendly fashion. But Nehru has closed all roads. This leaves us only with war. As I see it, to fight a bit would have advantages. It would cause some people to understand things more clearly. Mao agreed. Right. If someone does not attack me, I won't attack him. If someone attacks me, I will certainly attack him. Mao directed. First, the PLA had to secure a victory and knock Nehru to the negotiating table. And second, Chinese forces had to be restrained and principled. And which they were. Yes. The debacle. Alarmed by the Indian massing of troops in Dola and the Indian attempts at Yumsola, and on 10th October 1962, thanks to General B.M. Call, or thanks that as an excuse, Chinese overran Dola. That as an excuse. Thanks to General B.M. Call, or taking that as an excuse. Thanks for B.M. Call or taking that as an excuse. Chinese overran Dola on Indian attempt. Overran Dola on. The reaction to Indian attempt. कहाँ पे है दादा? मैं तो यहीं पे पढ़ रहा हूँ, ये वाला पढ़ रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ ये जगह देखे ना, इंडियन अटेम्प्ट एट जमसोला on 10th October 1962, उसी का रिएक्शन था ये. चाइनीज ओवररन बोला on 2nd October. कहना ये चाह रहा है हेरल्डिंग कि जीएम हम लोग किए पहले ना,
Alarmed by the Indian massing of troops in Dhola हाँ. and the Indian attempts at Yamsola on 6 October 1962, thanks to General B.M. Paul for taking that as an excuse, China overran Dhola on 2nd of October 1962, 1962, heralding the heralding the 1962 war. 1962 war. Call has to कहने be का मतलब ये कि यमसोला में ये सब जगह हम लोग उंगली नहीं करते, तो ये आगे इन लोग नहीं बढ़ते ना, थोड़ा ओवररन नहीं करते। ये लड़के ही फेमस होना चाहता था कि ये टेबल पे बात करके भी हो सकता था ये चीज। कॉल नहीं, हैज टू मुझे बी लगता ब्लेम्ड। है ये चाइना लोग जो बात करने को बोल रहे थे ना, तो उसको ये वीकनेस समझ रहे थे चाइना की, क्योंकि उधर वो तो फंसे हुए थे ना, कोरिया में फंसे हुए, ताइवान में फंसे हुए थे, तो इन्हें कोई उंगली कर रहा होगा पीछे से कि दे आर वीक। मुझे ऐसा लगता है दे विल नॉट अटैक, ऐसा कुछ था एक नहीं, दिमाग उनके में। अदरवाइज टोटली वो जो क्या था जरूरत थी ना, वहां पर ढोला में और यमतोला में जाकर के फौज इकट्ठा करने की। नेहरू साहब के इर्द गिर्द जो घूमते थे वहां में हाँ मिलाने वाले थे। वही उनके ना, मुंह पे अभी कुछ आएगा ना बोलते वो नहीं जो थे। इसने आर्मी का पॉलिटिसाइजेशन किया था, उसमें आएगा, नीचे आएगा वो। General Call as a responsible Call has to be blamed for it. Having seen the situation firsthand, General Call, as a responsible professional, should have put his foot down on India's forward policy misadventure to save the Indian Army from the sure debacle it was staring at. This is from the book Himalayan Blunder by हमने Brigadier पढ़ा हुआ J.P. पहले, हाँ ये पहले हमने कहीं पढ़ा है, इसको मैं आगे करता हूँ, जो आगे कर उसको पढ़ा है हम लोगों ने। जब हम लोगों ने चाइना इन्वेजन के बारे में पढ़ा था ना, वायर के बारे में, तब ये पढ़ा हुआ यहाँ पूरा पढ़ा हम लोगों ने। President Dr. Radhakrishnan यहाँ पढ़ो, प्रेसिडेंट वाला पढ़ो, प्रेसिडेंट told him राधाकृष्णन of a rumor that General B.M. Paul had been taken prisoner by the Chinese. He commented, "It is unfortunately untrue." Nehru admits his blunder. Wrote as Gopal, Nehru's official biographer, things went so wrong that had they not happened, it would have been difficult to believe them. This is what Nehru himself admitted. We were getting out of touch with reality in the modern world and we were living in an artificial atmosphere of our creation. We feel India has been ill-repaid for her diplomatic friendliness towards Peking. Difficult to say the Chinese have deliberately deceived us. We may have deceived ourselves. सही बात। Blunder 37. Criminal neglect एक and मिनट, defiance. इसको समाप्त कर दो। मतलब कहने का मतलब हाँ। ये है कि चाइना वाज नॉट रिस्पांसिबल फॉर द वॉर। इन लोगों ने उंगली किया है उसको पीछे से कि तू कर लड़ हमारे से, लड़ और उस चक्कर में लड़ा है बेचारा वो। कल के पहले मैं भी इस गलतफहमी में था कि चाइना जो है सब कुछ किया है। अब तो साफ हो रहा है कि उन लोग कुछ लड़ने के लिए तैयार भी नहीं थे और सेटलमेंट चाहते थे बॉर्डर डिस्प्यूट का। हमने बार बार मना किया उनको, कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। वहाँ जाके इधर घुस गए उधर घुस गए, तो उन लोग थोड़े ना चुप बैठेंगे। जी दादा, मेरा भी गलतफहमी तो पहले तो उनको आने देना नहीं चाहिए ना तिब्बत को, जो इसने वो किया, अलाउ किया अनेक्स करने के लिए, तब तो शांति से बैठा हुआ था। और जब दरवाजे पे आ गए तो वहां पे उंगली कर रहा है। जी दादा। Criminal Blunder 37. Criminal neglect of defense and external criminal neglect of defense and external security. The art of war is vital importance to the state. The art of war is of vital importance to the state. It is a matter of life and death, a road either to safety or to ruin. Hence, it is a subject of inquiry which can be on no account be neglected. सुन जो लिख रहा है आर्ट ऑफ वॉर, एक बहुत फेमस किताब है। अभी भी पढ़ाया जाता है। टैब मारते ही कहीं और निकल जाता है। Which can on no account be neglected. Sun Tzu, Art of War. The country that has been under the foreign domination for about a millennium
First under the Muslim invaders and then under the British, it was expected that its own Indian rulers would give top priority to its external security after independence in 1947. But did that happen? No. Nehru and the Congress brought up on the lethal dose of non-violence, pacifism, and Gandhism, substituted wishful thinking of real For wishful thinking for real wishful politics. thinking for real politic, Real politics. and negligently put India's external security requirements on the back burner. Please also check blunder number 16. Nehru seemed to be clueless, even irresponsible, and not realizing what it took for the country of the size of India, with its many inherited problems, to be able to defend itself adequately, and deter others and, Deter and, others. and deter others from any designs over it. On the one hand, Nehru failed to settle border issue with China, and on the other, he did precious little to militarily secure the borders. Militarily. With claimed ours. Nehru and his defense minister Krishna Menon ignored the persistent demands of military upgradation, wrote S.K. Verma ये in जगह बहुत 1962. इम्पोर्टेंट है, देखिए The ये war जगह बहुत that इम्पोर्टेंट, wasn't. एक मिनट ये जी जगह दादा। बहुत इम्पोर्टेंट है. Nehru and his defense minister Krishna Menon ignored the persistent demand for military upgradation. जी दादा, यही रीजन था हार का मेन. अगर एयरफोर्स यूज करते ना पीके तब भी ना हारते. हमारे पास एयर सुपीरियोरिटी थी उस टाइम पर कंपेयर जी टू दादा. चाइना. जी मतलब वो उस टाइम पे ऐसा था ना कि अगर आपको जो है हिमालय को क्रॉस करके और जो है अटैक करना इंडिया पे, तो चाइना के पास ऐसा कोई चीज नहीं थी, ऐसा कोई प्लेन नहीं था जो हिमालय क्रॉस करके इंडिया पे अटैक कर सके. इनफैक्ट इंडिया के पास थे. एयरफोर्स एट तेजपुर असम वर वेटिंग फॉर द ऑर्डर. इन्होंने ऑर्डर दिया ही नहीं उनको. जी दादा. मैं एक मिनट वो दूसरा शेयर कर देता हूँ, इसमें टैब से गड़बड़ हो रहा है. कहाँ तक पहुंचे तुम? टैब मत मारिए ना, वो दादा मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ ना अपने डॉक्यूमेंट से, इसलिए टैब मेरे को मारना पड़ रहा है. कहाँ तक पहुंचे? यहाँ तक आ गया, मैं आगे चल रहा हूँ. आपको दिख रहा है ना ये? तो अब वो चेंज कर दिया मैंने. दिख रहा. एक ही ब्राउजर पे ले लिया दोनों को मैंने. नेहरू सीम टू बी clueless. अच्छा ये तो हो गया ना 1962 वॉर दैट वाजंट. रोड एसके वर्मा. हाँ पढ़ो ना. हाँ. With Bose exist and Sardar Patel's death in 1950, there was no one. जी दादा. With Bose exist and Sardar Patel's death in 1950, there was no one who could provide the necessary inspiration for the reconstruction of an army that has so far. विक्रम जी म्यूट कीजिए थोड़ा सा. हाँ मैंने कर दिया. यहाँ से दोबारा पढ़ना पड़ेगा. There was हाँ. With Bose exist and Sardar Patel's death in 1950, there was no one who could provide the necessary inspiration for the construction of an army that has so far served British interest into an integrated military instrument that could identify potential threats and tackle them militarily. Nehru, unlike Bose and Patel, veered away from building military power. Jaswant Singh wrote that independent India simply abandoned the centrality of strategic culture as the first ingredient of
vigorous and bold Vigorous. vigorous and bold national politics. The seeds of Indian Policies. national Vigorous and policies. bold national policies. Ingredient for vigorous and bold national policies. The seeds of India's disgraceful debacle in 1962 India-China War were sown soon after independence by none other than Nehru himself, as he would be shockingly obvious from the following incident. Shortly after independence, the first Army Chief of Independent India, Lieutenant General Sir Robert Lockhart, first Army Chiefs of India and Pakistan were British then. As per the second procedure, took a strategic As per defense the plan standard procedure. As per the standard procedure. हाँ सर, कहाँ तक आ गया था मैं? Why? हाँ, Shortly after independence, the first Army Chief of Independent India, Lieutenant General Sir Robert Lockhart, first Army Chiefs of India and first Army Pakistan Chiefs were of India British and then. Pakistan were British then. As per the standard procedure, took a strategic defense plan for India to Nehru, seeking a government directive in the matter. Unbelievably, Lockhart returned shell-shocked at Nehru's response. The PM took one. The PM took at my paper One look. The PM took one look अच्छा, at my paper and ठीक है, blew ठीक his है. top. The Rubbish. PM took one Total look rubbish. at my paper and blew his top. Rubbish. Total rubbish. We don't need a defense plan. Our policy is ahimsa, non-violence. We force no military threats. Scrap the army. The police are good enough to meet the security needs. इसको Shouted Nehru. हाईलाइट करो भाई. We foresee no military threat. Describe the army. The police are good enough to meet our security needs. Shouted Nehru. Wow, wow, क्या बात है. अरे वाह, वाह नेहरू जी, वाह. भाइयों, नेहरू जी को भी फूल बरसाओ तो, कोई देख रहा है तो. दादा ये श्राद्ध वाले फूल बरसा देंगे दोबारा. हैं? हाँ, हरियाणा से कुछ लठ वाले पुलिस वाले भेज देते वहां पर. अरे बाप रे. ओहो. ये लीडर हैं जी हमारे, विजनरी लीडर. क्या गंद छोड़ गए हमारे लिए. शिट. फर्स्ट पप्पू ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. क्या यार. अब तो लाल बहादुर शास्त्री को गाली देने का मन करता है. दैट इडियट वाज हिज क्या बोलते हैं, मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो. जी दादा, क्या क्या करा जाए. इतनी सारी चीजें निकल के आ रही हैं. और पब्लिक बोलती है कि ये क्या तुम लेके बैठे हुए हो. जो पास्ट है वो पास्ट है. वाह. बाजवा साहब एकदम सही बोल. यही हिंदुओं की कमजोरी है कि मिट्टी डालो, जो हुआ हुआ. अगर आप अपनी गलती से सीखेंगे ही नहीं, आगे जनरेशन भी वही करेगी. आज यहूदी क्यों अपने बच्चे को जो 4-5 साल का होता है उसको स्कूल में, घर में पढ़ाना शुरू करते हैं कि हम क्या थे और हमारे साथ थ्रू आउट हिस्ट्री 3000 साल से हुआ क्या है और सेकंड वर्ल्ड वार में हमारे साथ क्या हुआ है, ताकि हर यहूदी बच्चा पैदा होता है कि उसे पता है कि नेवर अगेन. इन्होंने पूरी एक जनरेशन को बधिया कर दिया. बधिया समझते हैं सब. क्या मतलब दादा? मैंने बोला इन लोगों ने एक जनरेशन को पूरा इम्पोर्टेंट कर दिया, बधिया कर दिया. अच्छा, इम्पोर्टेंट. हाँ, पैसिफिस्ट बना दिया ना दादा. पैसिफिस्ट के लड़ना क्या लड़ना है. जैसे जापानीज हैं आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर, दे हैव बिकम पैसिफिस्ट. अब वो कोरिया चढ़ के बैठा हुआ है उनके ऊपर. अब उनको फटी पड़ी है कि अब के जी अपग्रेड करो अपनी सारी आर्मी एयरफोर्स को.
दादा वो तो अग्रेशन की वजह से पैसिफिस्ट बन गए थे ना, कि वो अग्रेशन बहुत करते थे, तो उनका तो समझ में आता है हम कौन सा अग्रेशन कर रहे थे, हमें तो जैसा रहना था वैसे ही रहना था ना, हमें थोड़ी नॉन वायलेंस उठानी थी। वो उठाए भाई जिसने पहले इतना वायलेंस करी है वो पैसिफिस्ट हो गया, समझ में आती है हमने कौन सा वायलेंस किया था। खैर आगे चलते, नेहरू फाइनली वेंट अहेड एंड रिड्यूस द आर्मी स्ट्रेंथ by about 50,000 troops after independence despite the looming threat in Kashmir and the Chinese entry into Tibet. ये देखो ये और अच्छा कश्मीर तो स्टार्ट हो गया था 1-1.5 महीने बाद से ही, तब भी आर्मी इसने 50,000 ट्रूप्स कम कर दिए थे। दामाद क्या लिख रहा है उसका, नेहरू का दामाद क्या लिख रहा है, पढ़ो नीचे। Noted Emma Mathai in the context of Khrushchev, गुलगानेन ये क्या है, Khrushchev गुलगानेन Bulgarian visit to India several times. Khrushchev emphasized the need for the first-class aircraft industry for a large country like India and volunteered to send some of the Soviet Union's best experts in the field. Somehow, it did not register with Nehru, and no follow-up action was taken. It was only after the Chinese invasion that we woke up to the grim realities and secured Soviet collaboration in the production of modern military aircraft, wrote RNP Singh in Nehru, A Troubled Legacy. Nehru took the matter of defense so lightly that in an answer to a question on India's defense against a potential aggressor, he asserted that the nation had the spirit to defend itself by lathis and stones if need be. वाह, वो चाइनीज सोल्जर नहीं साले कुत्ते हैं जिनको पत्थर मार के भगा देंगे। तभी तो तभी तो वहां पे पुलिस वालों को खड़ा करके रखा हुआ था बॉर्डर पे। क्या चुती आता है, सॉरी ये कतई झंडू थे ये क्या? कौन बोला, जय भारती बोल रहे हैं? सॉरी मेरे मुंह से निकल गया दादा, सॉरी बहुत। अरे बाप रे, नहीं एंगर शुड कम आउट, रियली बोलता हूँ, इट शुड कम आउट। नहीं ये जो वर्ड साले जो है जब से ना, बैठे हो ना नेहरू के गांधी के बेवकूफो, देख लो क्या चल रहा है यहाँ पर। इसकी इन पॉलिसी से वो हमारे 5 और हिस्से जो चाइना की 5 फिंगर पॉलिसी है, लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक खाने के चक्कर में है, नेपाल भी खा जाएगा। और हमारे सर मुसीबत इतनी बड़ी खड़ी कर दी है इसने। अब तो दादा क्या ही खाएगा, जो खाना था वो खा ही गया। चाचा नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते आज विक्रम ना भाई। हमारे यहाँ पे ना, नमस्कार सर, आज ना हमारे यहाँ पे एजिटेशन हो रहा था, एक जुलूस निकाला हुआ था, और वो जो जंतर मंतर पे पहलवान बैठे हुए हैं ना, उनकी फेवर में, तो वो पैदल मार्च कर रहे थे पूरे शहर में, और वो नारे लगा रहे थे, ब्रिज किशोर मुर्दाबाद, ब्रिज किशोर को अंदर करो। तो मैंने जब वो निकल गया ना, काफी लंबा था, मैंने एक को रोका, मैं क्या भाई ये ब्रिज किशोर कौन है? कहते वो जो कुश्ती संघ का प्रधान है ना। मैंने कहा मूर्खो, उसका नाम तो पता कर लो, किसके खिलाफ नारेबाजी करनी है। तो ये जो, हाँ, तो ये जो इनके भगत है ना, चमचे हैं जो, वो भी कुछ नहीं सोचते, बस उनको तो ये नारे लगाने हैं, नारे लगाने हैं। ऐसे वो शुरू से ये सब ब्लंडर पढ़ने के बाद और सुनने के बाद जो उसका है ना, थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बता देता हूँ पब्लिक के लिए। हाँ, ब्रिजभूषण शरण सिंह साहब को ये जो अध्यक्ष बनाया ना कुश्ती संघ का, ये बनवाया था उस समय ये समाजवादी पार्टी में थे। समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह साहब ने अहमद पटेल को बोला था कि दीपेंद्र हुड्डा को बोलो कि इलेक्शन ना लड़े। अच्छा, और इसलिए दीपेंद्र हुड्डा ने इलेक्शन नहीं लड़ा था। दीपेंद्र हुड्डा इलेक्शन लड़ना चाह रहा था और ब्रिजभूषण शरण सिंह भी लड़ना चाह रहे थे। तो उस समय समाजवादी पार्टी में थे
और समाजवादी पार्टी में जब देखा दीपेंद्र हुड्डा लड़ रहे हैं तो उनको मालूम पड़ा कि अरे बाप रे कैसे हो सकता है, तो उन्होंने मुलायम सिंह को बोला, मुलायम सिंह ने अहमद पटेल को बोला, अहमद पटेल ने दीपेंद्र हुड्डा को बोला, अब उनके बाप को भी बोला भैया ऐसा करो मत लड़ो, इसको बन जाने दो। तो ये पाप तो उनका है, मुलायम सिंह का कांग्रेसियों का थोपा हुआ है। अब उसके बाद में 2019 के इलेक्शन में अगर वो यहाँ से एमपी बन गया, बीजेपी में आ गया, तो क्या गड़बड़ है? दूसरी बात, ये जो लड़की है फोगोट, क्या नाम है, फोगाट, वो बोलती है कि मेरे को ब्रजभूषण ने टर्की में छेड़ा। रिकॉर्ड बताते हैं को टर्की गया ही नहीं था जब वो टर्की में थी। फिर बोलती है नहीं मंगोलिया में छेड़ा। मतलब पहले तुम कुछ बोलते हो फिर कुछ बोलते हो। अरे बेवकूफ, तू जब टर्की गई थी, मंगोलिया गई थी, तो ड्रग के चक्कर में तेरे को हटा के बाहर किया गया था, विनेश फोगाट को। आज की डेट में अभी सारा पॉलिटिकल टूल है ये। 2024 तक के इलेक्शन तक ये कुछ ना कुछ खुराफात करते ही रहेंगे, चलता रहेगा। हाँ, है तो सारा पॉलिटिकल, ये तो उसी का ही है एक्चुअली। पता क्या, निशाना कहीं और लगा रहे हैं ये, और टारगेट उसको करके निशाना इनका वो है कि भाई बीजेपी को हरियाणा में बदनाम करो। आज स्मृति ईरानी ने बम तोड़ दिया ना कि 2019 में मैंने देखा था, ये अमेठी में नमाज पढ़ रही थी रोड पे प्रियंका। ये कौन होती है? हिंदुओं के देवताओं के बारे में बात करने वाली, जो इस्लाम धर्म का पालन करते हैं वो मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं, बोला तो उसने आज। एनीवे, ये क्या बोलते हैं कि चाइना का जो ये हम कहानी सुना रहे हैं ना बबलू, तो जब तुम्हारी मतलब मेरे ख्याल में किसनी बुआ की शादी हुई थी या किसी की शादी हुई थी, उस समय उन्नाव से बारात आई थी, तो उसमें एक बाराती ऐसे थे जिनके हाथ पैर कटे हुए थे। ओहो। तो वो पिताजी के पास में बैठे हुए थे। ये मेरे ख्याल में 64 या 65 की बात है। उस समय से किसनी की शादी हुई थी या देवश्री की शादी हुई थी, किसी की शादी हुई थी मेरे ख्याल में। तो वो पिताजी को कहानी सुना रहे थे, जो ये कहानी बता रहे हैं यहाँ पर। उनके मतलब बम गिरा था उनके ऊपर, तो मतलब उनके हाथ पैर जो है ना पूरे कट गए थे। तो बोलते थे कि हम लोगों को वहां पर बिल्कुल जैसे कि मतलब होता ना कि बच्चों को बिठा देते बाद में निशाना मारते रहो, इस तरीके से बिठा दिया था कि तुम नहीं गोली चलाओगे, तुम शांति से बैठे रहोगे, उनको जो कुछ करना करने दो। तो कह रहे हैं अभी मैं भुगत रहा हूँ कि ना मेरे हाथ है ना पैर है। अभी जब कारगिल हुआ था, कारगिल, तो चाचा आए थे ना, तो चाचा के भी दोनों पैरों में, दोनों हाथ में, गर्दन में, गले में और कमर में भी FRFC धागे से ना टोकन बंधे हुए थे। तो मैंने पूछा, वो यहाँ पे कुरुक्षेत्र रुके थे, तो मैंने बोला भी ये क्या बंधे हुए हैं? तो उन्होंने बताया था भी ये वार के टाइम पे ना बांध दिया जाता है, इसके अंदर एक नंबर लिखा होता है भी वो मेरा डॉकेट नंबर है, अगर कल को ब्लास्ट हो गया, कुछ हो गया, तो मेरा कोई अंग मिलेगा तो उससे शिनाख्त हो जाएगी कि भाई ये आदमी था, इतना, ये हमारा है। हाँ। तो मैंने कहा फिर आपने कितने मारे? तो बोलते वहां मौका कहाँ मिलता है, वो साले ऊपर से गोलियां चला रहे हैं, हम नीचे हैं, तो हमारा निशाना लगेगा कि उनका लगेगा? तो ये वो भी तो होने ही दिया ना, उसी चक्कर में सौरभ कालिया और मारे गए ना। हाँ, वो दिन तो अभी भी, जब भी ऐसे था, हमारे घर का फोन बजता था ना रात को भी, तो हमें ये लगता था हाय कहाँ से फोन आ गया। मतलब वो टाइम तो हमने भी देख लिया, वार का टाइम एक तरह से ना। हर बात तो बेवकूफी करते हैं, इंटेलिजेंस रिपोर्ट वगैरह कुछ बताता तो ये सुनता नहीं है। जब घुस गए लोग कारगिल में, तब बोला कि जाओ अटैक करो, तो स्टीप क्लाइंब में जो फर्स्ट मतलब पीपल गए, उसमें तो सोल्जर्स गए। हाँ, काफी लोग मरे, बहुत मरे लोग। उसमें जो वहां कमांड कर रहा था ना, वो सरदार जी था, उसको साले कोर्ट मार्शल होना चाहिए। तो उसकी गड़बड़ थी, he could not get the, he was informed but he did not pass the information to army headquarters। मिलिट्री वालों के जो वहां पर वो भेड़ चला रहे होते हैं ना, जानवर चला रहे होते हैं, वो लोग इन्फॉर्मर होते हैं। पहले ही बता दिए थे। हाँ, वो इन्फॉर्मर ने तो इनको बताया था भी वहां पे कुछ है। बहुत पहले
वो तो चाचा एक बता रहे थे कि भाई वो ना एक एयरफोर्स ने जब वहां पे एक बम गिराया, उसका नाम भूल गया मैं उस बम का, वो जहां पे गिरता था उसका काफी सारा एरिया जो है ना वो पाउडर बना देता था, तब उनके बंकर टूटे हैं, नहीं तो उन्होंने तो अंदर पक्के बंकर बनाए हुए थे। कारपेट बमिंग बोलते हैं। हाँ, वो जो था ना, वो पाउडर बना देता था अंदर ही अंदर उसको। चलो प्रदीप आगे चलो पढ़ो। इसको, हाँ आगे आगे तो चलो। ज्यादा आप उसकी क्या थे ना, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। आजादी के नारे दिखा देता हूँ। मरने दे सालों को, इनको नालायकों को, बेवकूफ कहीं के। काम धंधा है नहीं। छोड़ दे, इसकी पब्लिसिटी मत करो हमारे दोस्त में। और ये तो शाहीन बाग जैसा ही होगा, शाहीन बाग 2 है ये, इसको तो देखने का कोई फायदा नहीं है, इसकी तरफ तो, इसके तो न्यूज भी नहीं सुनते हम, कुछ नहीं, बकवास है ये। 11 मई को शिकायत देख वहां, लेना, 13 मई को सब खत्म हो जाएगा ये। शिकायत वहां पे है, केजरीवाल वहां पे है, शैलजा वहां पे है, कर्नाटका दुनिया का भर के इलेक्शन का रिजल्ट हाँ, आने दो, सब खत्म हो जाएगा भाई, रुक जाओ, शांति से बैठो। जी दादा, कहाँ तक हो गया था? ये था इधर। Therefore, I am not afraid of anybody invading India from any quarter while delivering a speech in Parliament. Nehru once advised in a realistic manner, if you better your morale and determine not to surrender, nothing can conquer you. Nehru told a press conference, I think the proper way to consider defense is to begin to forget the military aspect. इसके पलाठी के नीचे वाला हो गया। Wrote R.N.P. Singh in Nehru. ठीक है। नीचे वाला खत्म हो गया, आगे जाओ। गिविंग सच ए माइंडसेट, गिव इट सच ए माइंडसेट से पढ़ो। मिला? हाँ। गिवन सच अ माइंडसेट, Given such a mindset, only God could have saved India in times of disaster. Unfortunately, God to abandon India in the 1962 war. Perhaps God was cheesed off by the rational, scientific-minded, atheist, agnostic Nehru. Despite the glimpses of the world history and the discovery of India, Nehru failed to discover that India suffered slavery for well over a millennium on account of its weaknesses to defend itself. No wonder he neglected modernization of the army, strengthening of defense, and pacts with powerful nations to deter enemies and ensure India's security. General Thapar had submitted a note to the government in 1960, pointing out that the equipment that the Indian army had and their poor condition was no match to that of China and even Pakistan. Prior to the operations against China to get certain territories vacated, Thapar had impressed upon Nehru that the Indian army was unprepared and ill-equipped for the task it was being asked to undertake, and even got Nehru to cross-check these stark realities from some of his senior staff. Yet Nehru persisted, saying China would not retaliate. General Thapar told Kuldeep Nair on 29 January 1970 that stated by Nair in his book Beyond the Lines. Looking back, I think I should have submitted my resignation at that time. I might have saved my country from the humiliation of defeat. Nehru's government indifferent approach to defense rested on the presumption that China would not attack India. Wrote Durgadas, if Krishna Menon was guilty of hugging the illusion that China would not attack, so was Nehru, perhaps to a greater degree. He openly ticked off General Thimaiya, Chief of Army Staff, at a governor's conference months earlier for even suggesting the possibility of an attack by China.
Many others in the cabinet were not innocent, either through ignorance of or fear of going contrary to the prime minister. That was Nehruvian democracy. ये FOE क्या है दादा? ये वाला FOE and equality of cabinet system of government for you. They endorse दस मिनट कहाँ पे? ये FOE ये वाला आज नेवन लोग से पता नहीं यार. खैर मैं इसको FOE पढ़ देता हूँ. FOE. That was Nehruvian democracy. Nehruvian democracy. FOE and quality of cabinet system of government for you. They endorse the complacent attitude. General Thapar, the chief of army staff had requested for urgent additional funding to make good and gross deficiencies in armaments in July 1962. That happened to be about 3 months before the actual war. When the request was referred to Nehru, he shot it down saying China would not resort to force. रमन राघव बोल रहा है फ्रीडम एक्ट फिक्शन होता है. The army had made it sufficiently clear to Nehru and Menon that being outgunned, outtanked and outmanned by the Chinese, they won't be able to hold against them. Yet the wise politicians persisted with their harebrained forward policy. Blunder 36. Earlier, the India's army chief K.S. Thimaiya had repeatedly raised the issue of army's gross weaknesses and in defending itself from China, frustrated at his failure to get the needful done despite his entreaties to Krishna Menon and Nehru. This is what he told his fellow army men in his farewell speech upon retirement in 1961. I hope I am not leaving you as cannon fodder for the Chinese. God bless you all. Thimaiya earlier remarked, I cannot even as a soldier and envisage India taking on China in an open conflict on its own. China's present strength is manpower, equipment and aircraft exceeds our resources. प्रदीप एक मिनट. दिख रहा है? संदीप वाजा साहब ने ये शेयर किया है. हमारे प्रेसिडेंट साहब मानिक साहब को हॉस्पिटल में देखने गए थे. सैम मोनिक्सा के इंटरव्यू भी जो है ना वो भी देखने लायक है. When Dr. Abdul Kalam was the president, he visited Kannur. On reaching, he came to know that Field Marshal Sir Sam Manekshaw was in the military hospital there. Dr. Kalam wanted to visit Sam, which was unscheduled. Arrangements were made at the bedside. Kalam spent about 15 minutes. आ गया. अच्छा एक मिनट. ये बहुत बड़ा है भाई. पढ़ लेते हैं इसको पूरा. देखते हैं क्या बोल रहा है ये. 15 minutes talking to Sam and inquiring about his health. Just before leaving, Kalam asked Sam, are you comfortable? Is there anything I can do? Do you have any grievance or any requirement that would make you more comfortable? Second part. Sam said, yes, Your Excellency, I have one grievance. Shocked with concern and anguish, Kalam asked him what it was. Sam replied, sir, my grievance is that I am not able to get up and salute my most respected president of my beloved country. Kalam held Sam's hand as both were in tears. Third part. But the remaining part of the tale with regarding this meeting is that Sam did tell APJ that he was
not paid the pension of the field marshal rank till then for nearly 20 years. Fourth part. And aghast, President went to Delhi and passed the pension without arrear. With arrear within a week and sent the check of nearly 1.25 crore through the Defense Secretary by a special plane to Wellington, Ooty, where Sam was ailing. That is the greatness of APJ. Fifth part. But then Sam received the check and promptly donated it to the Army Relief Fund. Whom will you salute now? Indeed, these real heroes are missing today. ये क्या है? 52 parties are standing to protect 22 crore Muslim and 7 crore Christians, and one man is fighting them alone to protect 100 crore Hindus. You just have to press one button to vote. अच्छा, खैर ये वहाँ की बात कर रहे हैं. ये देखो भाई, ये क्या है? केजरीवाल का स्कूल. देखिए ये प्राथमिक विद्यालय है और यहाँ पर उर्दू का कलमा पढ़ाया जा रहा है. खोलिए किताब, खोलिए अपनी किताब खोलिए. ये सारे मौलवी बैठे हुए हैं, यहाँ पर कलमा पढ़ाया जा रहा है. ये देखिए सरकारी विद्यालय के अंदर क्या हो रहा है. विद्यालय के अंदर अनुसंधान हो रहा है. क्या सिखा रहे हो? मारकाट सिखाते हो सबको? क्या सिखाते हो? तुम्हारा कलमा क्या सिखाता है? कोई नहीं जाएगा जब तक के अंदर. आप देख सकते हैं आज छुट्टी के दिन. चलो ठीक है, मैं बंद करता हूँ इसको. इतना ही था. आगे चलो. मैं पढ़ूं क्या? क्या हुआ? मैं पढ़ूं? Sorry, Dada. Himaya had earlier remarked नहीं, मैं कर रहा not even as a soldier envisage India taking on China in an open conflict on its own. अच्छा ऊपर पढ़ूं क्या? Earlier, the Indian Army Chief K.S. Himaya मैं कर रहा हूँ दादा. raised. वो मेरा वो म्यूट था, मुझे पता नहीं था. Earlier, the Indian Army Chief K.S. Samaiya had repeatedly raised the issue of India of Army's gross weaknesses in defending itself from China, frustrated at its failure to get the needful done despite his entreaties to Krishna Menon and Nehru. This is what he told his fellow army men in his farewell speech. अच्छा, ये वाला तो पढ़ लिया था मैंने. Thamaiya had earlier remarked, I cannot even as a soldier envisage India taking on China in an open conflict on its own. China's present strength in manpower, equipment, and aircraft exceeds our resources 100-fold with the full support of the USSR, and we could never hope to match China in the foreseeable future. It must be left to the politicians and diplomats to ensure our security, commented Brigadier Dalby. There was no overall political objective, no national policy, no grand strategy, and total unreadiness for military operations in the awesome Himalayan mountains against the first-class land power. We did not study the pattern of weapons and communication equipments that we may require. Army schools of instruction were oriented towards open warfare. There was little emphasis on mountain warfare despite the army's deployment in Kashmir from 1947. The army was forgotten, its equipment allowed to become obsolete, certainly obsolescent, and its training
Academic and academic outdated. training, academic and outdated. We merely tried to maintain that we had inherited in 1947. The political assumptions of our defense policies were invalid and dangerous. In October 1962, Indians were shocked beyond words to discover that we had no modern rifle, although we were supposed to be ready to manufacture an aircraft and had the know-how to make an atom bomb. Assam rifles posts under the forward policy were deployed non-tactically, and they were ill-armed and even worse equipped than the regular army. At best, they could only function as border checkposts, and yet their task was to fight to the last man and the last round. There were no intercommunication facilities between Assam Rifles post and the nearest army subunit. The standard explanation was that there was a general shortage of wireless sets in the country. The Assam Rifles was a separate private army of the External Affairs Ministry, and would dare bell the cat? Who would dare bell the cat about the extraordinary command system? दादा ये डेलिबरेटली मरने के लिए झोंका गया था। ये मुझे लग रहा है ये नफरत करते हैं भारत से बहुत ज्यादा। जितनी भी चीजें आ रही हैं ये उसी तरफ इशारा कर रही है सारी। Reportedly, at a meeting of the Defense Council in September 1962, a month before the Chinese attack, while the army commander in Ladakh had stated, if China attacks massively, we shall be annihilated. The head of the Eastern Command he had said, if China decides to come down in a big way, we are in no position to hold it anywhere in NEFPA. Nepal means what? Arunachal Pradesh, huh? Although despite of severe handicaps, Indian soldiers did their very best. The fact remains that it was pathetically ill-prepared, ill-fed, ill-clothed, ill-supplied, and ill-armed Indian army, exposed to the elements, cold and hungry, that was forced into the misadventure, and it had to pay a very heavy price for the relatively minor operation against the Portuguese in Goa in 1961. One battalion was short of 400 pair of footwear and went into the battle in PT shoes, as narrated by General B.M. Call. Nehru wild claim, bluff. Despite the above facts, Nehru stated bluffed in the parliament. I can tell this house that at no time since our independence, and of course before it, were our defense forces in better condition, in finger fatal, than they are today. I'm not boasting about them or comparing them with any other countries, but I am quite confident that our defense forces are well capable of looking after our country. Bullshit. ये गोवा में जीत गया था, सोचता था कि चलो ठीक है, गोवा में जीत लिया आर्मी ने तो हम वहां पे जीत लेंगे, चाइना में भी। वाह, मतलब इतना ज्यादा गया गुजरा इंसान था ये, जानबूझ के मरवाना। ऐसा लगता था अंदर से नफरत करता था हिंदुस्तान से। इसके जितने काम है सब उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है ही वांटेड ब्रिटिश बैक, कि ब्रिटिश आ जाएंगे, अमेरिकन आ जाएंगे और फिर से इंडिया को रूल करना शुरू कर देंगे, इसीलिए इसने इधर बॉर्डर को छोड़ के रखा था, लगता है। मैं तो प्रधानमंत्री बना रहूंगा, नो प्रॉब्लम। वो तो पहले भी था, 47 से पहले भी था, ऐसा मुझे लगता है। ही वांटेड ब्रिटिश बैक, जिससे कि फिर एडविना वापस आ जाए और आराम से मेरे को मस्ती मारने का मौका मिले, ये चाह रहा था ये। आगे पढ़ता हूँ दादा, भी बहुत सारा काम है ना। ओह, Blunder 38. मैं पढ़ूं? Politicization of the army. Politicization of the army high command was one of the reasons India
performed miserably in the India-China War. Instead of heeding sound military advice, Nehru and Menon had put in place submissive officers at the top in the military who would carry out their orders. Krishna Menon ill-treated people. He was offensive to the top brass of the military. He antagonized many through his acerbic comments, sarcasm, and supercilious behavior. He had publicly humiliated top brass of the army. Eventually, some of their chosen submissive officers contributed to the humiliation of India. General Verma had dared to write to the higher authorities the facts of poor operational readiness. He was asked to withdraw his letter. He refused and wanted the letter to be put on record. That honest, forthright, and very capable officer was victimized. Ultimately, he resigned, wrote Inder Malhotra. To cap it all, it was Menon's penchant to play favorites that was responsible for the disaster of Lieutenant General B.M. Call, with hardly any experience of combat being appointed as commander in the battlefield and retained that position even when he was lying ill in Delhi. It was the same Nehru protege, General B.M. Call, who, to please Nehru, took forward the forward policy, was responsible for the Dola disaster, and landed India into a soup. B.M. Call had replaced General Umrao Singh, an able, upright professional who had been removed for not falling in line with what the political leadership Nehru and Menon wanted. He had objected to the reckless putting up of forward posts, having undertaken to go what Umrao Singh had hang-ups about. Call could not very well turn around and express difficulties. Someone who would play the politician's game was urgently needed, and Call had willingly stepped into that role. Wrote G.S. Bhargava in his book, The Battle of Nefa, यानी ये इसका फुल फॉर्म क्या दादा? नेशनल नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, ठीक है. अरुणाचल. Wrote G.S. Bhargava in his book, The Battle of Nefa, a new class of army officers who could collude with politicians to land the country in straits in which it found itself in September, October 1962, since qualities of heart and head ceased to be a passport for promotion for military officers. The more ambitious among them started carrying favor with the politicians. Blunder 39. Anti-armed forces. It may sound odd, but Nehru was so obsessed about continuing in power, and unnecessarily and irrationality. Unnecessarily and irrationally concerned of the possibility of the army coup, that he went to insane level of checkmating that possibility, even to the extent of harming the Indian defenses, Indian external security, and the morale of the army. The top bureaucracy noticing Nehru's suspicion for his bias against the army. Wait. जो मैं कह रहा था वही बात आ गई. Wait. ये बताओ, जब ये तमाशा चल रहा था, जब ये पॉलिटिसाइज कर रहा था आर्मी को और बीएम कॉल को वहां पे पोस्ट कर रहा था, दूसरों को वो कर रहा था, was he not scared of as has happened in पाकिस्तान? वहां पर तो आर्मी ने टेक ओवर कर लिया था ना, अयूब खान तो आ गया था, तो इसको डर ये लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि अगर आर्मी को मैं स्टैंप कर दूं तो यहाँ पर भी आर्मी टेक ओवर कर लेगा, ये इसको डर लग रहा था. इस चक्कर में इसने अपने चमचों को आर्मी में घुसेड़ा था. ये मेरे को पॉसिबिलिटी लगती है, इसीलिए इसने आर्मी को वीक करना शुरू कर दिया था. पढ़ो आगे. इसने वहां से लेसन लिया क्या दादा?
वहीं से लिया इसने। अयूब खान आ गया था ना वहां पर, 1959 में आ गया था ना वो उधर, तभी से इसने आर्मी को वीक करना शुरू कर दिया होगा। The top bureaucracy, noticing Nehru's suspicion for and bias against the army, cleverly maneuvered and note declaring the armed forces headquarters as the attached office of the defense ministry. That ensured ascendancy for the top babu of the defense ministry. The defense secretary were the army chief. The post of commander-in-chief, the main advisor on military matter, was abolished. The role was given to the President of India. The President became formally the Supreme Commander of the armed forces. The real motive was to remove the possibility of the army commander ever challenging the civil authority. Yes. When you had adopted the complete British political system, bureaucratic system, and the army system, lock, stock, and barrel, and where there had been no occasion in the independence period either in India or Britain, when the commander-in-chief had booted out the civil authority. क्या हुआ? एक मिनट रुको कहाँ क्या हो गया? एक मिनट। Yes, sir. Why that uncalled for concern? ज्यादा सिविलियन अथॉरिटी तक आपने पढ़ लिया, उसके आगे मैं पढ़ देता हूँ। Why that uncalled for concern? The British Indian Army under the British during the pre-independence days, though under the political control of the Governor General, enjoyed a large degrees of autonomy and was not subsequent to the bureaucracy that changed post-independence. Rather than recognizing the tremendous contribution of the Indian armed forces in the First and Second World War and giving them pride of place, the political class and the bureaucratic class conspired to downgrade the position of the military top brass by instituting various changes in the pecking order, reporting channels, and the constitution of the committees. The place next in stateliness and grandeur to the Viceroy place was the residence of the British Commander-in-Chief, then called Flagstaff House. That house should have been allocated to Field Marshal K.M. Karayappa, but Nehru, leaving his spacious York Road residence, promptly allocated it to himself. Such were the Gandhian values of simplicity imbibed by him. Flagship House was later renamed as Teen Murti Bhavan. Changes were done. मतलब करियप्पा के घर को लूट करके उसको तीन मूर्ति भवन बना दिया इस भाई ने। वाह, फ्लैग ऑफ स्टाफ। Changes were done where the bureaucrats began to be ranked higher than the senior military officers, with respect to the top IS babus. The three service chiefs have been downgraded. They interact with the defense secretary, who is the interface between the armed forces and the union cabinet. Matters related to the defense production and defense purchases also came primarily under the bureaucrats in the defense ministry, though army men were represented in committees. Whichever domain, department, sector, the babus, the IAS stepped in the area went to dogs. Babus, who knew next to nothing on the defense matters, started dictating terms and making money. Politicization and favoritism became the order of the day. The professionalism went for a toss. Instead of exercising political control over the military, what is exercised in practice is bureaucratic control. Defense secretary is the boss, and the service chiefs have a subservient role, with the military isolated from the real decision making. Such was the Nehruvian hubris that sidelining the military seniors, even purely military matters tended to be decided by Nehru, Krishna Menon, and other politicians and bureaucrats like
the harebrained forward policy blunder 36. Even the post facto inputs of the Indian Army on its military and strategic implications were ignored by Nehru Menon. Worst was keeping the military weak. Worst was keeping the military weak, lest they ever challenge the civilian authority. Military remained grossly underfunded. It continued with the obsolete Second World War equipments. During the Nehruvian times, the defense ministry had very low importance. Senior ministers senior ministers shunned it. It was considered not an important enough portfolio for a senior politician. इतना डाउनग्रेड कर दिया था. ब्लंडर 40. भारती साहब कमेंट करिए इसके ऊपर, देखो कितना बुरा हाल किया था मिलिट्री का. वाह. तो दादा आपने एक कमेंट किया था तो मैं रुका हुआ था, जो कि जनरल आयु 59 में आया, और इसको भी यही एप्रीहेंशन होगी. आपका जो एनालिसिस ठीक है, मैं उसको सेकंड करता हूँ. आई एग्री विद एनालिसिस, क्वाइट पॉसिबल, इसलिए इसने आर्मी का ये हाल कर दिया. और ये अभी तक चल रहा है. हाँ, अभी भी आईएएस बाबू बनता है डिफेंस सेक्रेटरी, और वो ब्रिज का काम करता है उनके बीच में, आर्मी के बीच में और पॉलिटिशियंस के बीच में, डिफेंस मिनिस्टर के बीच में. अभी भी वही डिसीजन लेता. अभी तो दुनिया भर का घोटाला हुआ है इसमें, आर्मी में के परचेजेज में, इधर उधर में, सब में. तो वो गौरव आर्य को सुनो, वो ठीक तो कहता है कि एक आईएएस ऑफिसर आर्मी प्रोक्योरमेंट रिक्वायरमेंट की फाइल पे अगर बैठा रहेगा तो आर्मी क्या करेगी. अच्छा, उसके जेन्युइन वो भी हो सकते हैं कि यार मेरे पे करप्शन के चार्जेस ना लग जाए. इस चक्कर में आर्मी के पास ना तो प्रॉपर बुलेट प्रूफ वेस्ट थी, ना प्रॉपर हेलमेट्स थे. तो अगर यही ज्यादा ब्यूरोक्रेसी, कपड़े नहीं थे, बाकी तो छोड़ दो. हाँ, हर चीज में अभी भी -40 में अगर कपड़े नहीं हो, कम से कम इतनी तो रिक्वायरमेंट होती है. बंदूक और कपड़े, दो चीजें, ये भी नहीं थी उनके पास. अरे एक इंटरव्यू सुनी थी, हरियाणा का एक सोल्जर, उसने काले रंग का चश्मा लगाया हुआ, पता नहीं उसकी आंखें चली गई थी क्या. वो यही कह रहा था, सूती कपड़े हमारे पास, सूती जूते. मैं वो ढूंढ रहा हूं. मैंने अभी 2 लिंक्स डाली हैं. एक तिब्बतन है, 2.5 मिनट की, वो है कि आईटीबीपी का जो उस टाइम पे 1962 वॉर में होगा वो, इसके बाद में. और एक शेखर गुप्ता 9 मिनट का वीडियो है, 2 शायद 62 वॉर के हैं वेटरन्स, उनके साथ बात. इसके बाद यू मस्ट प्ले दैट कि देखो जो लोग थे वहां पर, जो सोल्जर्स, उनकी टेस्टिमनी वो बोलते क्या है. इट विल बी गुड फॉर द ऑडियंस. लेकिन इस आर्टिकल के बाद, पूरा होने के बाद, दादा ये वाला शायद 39 के बाद ही दिखाना चाहिए. हाँ, लास्ट जैसे में करेंगे ना उनको दोनों को. हाँ, लास्ट में करेंगे ना, जब ये पूरा प्रेजेंटेशन खत्म हो जाएगा तब दिखाएंगे ना. हाँ, तब दिखाएंगे बिल्कुल. ठीक है. अगर ज्यादा बॉर्डर, वो दादा कितना बड़ा है ये वीडियो? एक 2.5 मिनट का है और एक 9 मिनट का है. शेखर गुप्ता वाला 9 मिनट का है. मेरे ख्याल से इतना तो चल जाना चाहिए. अभी दिखाना है. तो ऐसा हाँ कर दादा, टॉपिक अभी है. एक मिनट, जो पहली लिंक है ना, वो एक तिब्बतन है, आईटीबीपी फोर्स का बंदा, 2.5 मिनट का है. उसका एक वो दे दे, या तो वो दिखा दे. शेखर गुप्ता वाला एंड ऑफ उसके बाद दिखा देते हैं. क्योंकि 39 वाला जो हमने ब्लंडर कवर किया है ना, ये इसी रिस्पेक्ट का जो दादा ने भेजे हैं. टॉपिक ही उसका वो है. जब 62 से पहले तो हमारे यहाँ का लोगों को बहुत शांति था, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं था. 5 असेंबली ही था, कोई सेना नहीं था. जब लड़ाई होगा बोल के उसी समय से इंडिया का फौज आ गया ना. अभी आप क्या सोचते हैं कि 62 में तो साइनिस आर्मी तो यहाँ पर घुस चुके थे, हाँ, तो अभी तो ये तो मुमकिन तो नहीं होगा. हाँ, कहाँ सके वो. अरे उसका बिल्कुल वहाँ बॉर्डर पार नहीं कर सके वो. अभी कितना अच्छा डिफेंस बना है, इंडिया का डिफेंस इतना तकड़ा है, बंकर इतना मजबूत है. पहले 62 में नहीं था ना, जैसे फौजी का 3 में टेंथ मोर्चा ऐसे होता था, वही है. बंकर कहाँ था उस समय. इसी बॉर्डर में 20 साल बैठा है.
89 दिसंबर तक तो बेटा 89 दिसंबर में रिटायर हो गया। आप आईटीबी में थे? एटीबी में था हम लोग, एटीबी में था, बाद में एसएसपी बना। हम लोग को उसमें बहुत मिक्स था, नेपाली, आसामी, कछारी, यहाँ मम्पा, अरुणाचल का वो निसिङ लोग है ना, सभी जात मिक्स था। आईटीबी में कब आपने ज्वाइन किया था? 1965 दिसंबर में ज्वाइन किया, 1965 दिसंबर में। और रिटायर कब हुए? 1989 दिसंबर को रिटायर हुआ। हाँ, अभी तो बहुत साल हो गया ना। मुझको लगा इसकी उससे कि शायद ये 62 में था। और पीके मैं ढूंढ रहा हूँ वो हरियाणा का जो सोल्जर है जो उसमें था। आई एम लुकिंग इन यूट्यूब, यू कंटिन्यू। ठीक है, मैं अगले पे आ जाता हूँ फिर। एक मिनट रुक। जी दादा। This is the 50th anniversary of that war. We are all talking about it. And once again, the talk is all about what went wrong, what could have been, who was to blame. Books about the war have titles like The Himalayan Blunder, India's China War. इस चमचे को इम्पोर्टेंस क्यों war देने का यार? that ये this तो country नेहरू की चमचागिरी करता ideally would रहता love है। to forget, but cannot forget, because it's a war that's etched on our memories as one of the saddest chapters of our independent history. And it's sadder still that because of that overwhelming sense of failure in that war, we tend to forget, overlook, and sometimes almost मैं नहीं दिखाता इसको, ये चमचा है साला, नहीं दिखाता। नहीं दादा, ये बात करेगा ना 2 सोल्जर से। नहीं साहब, छोड़ दीजिए। ये क्लियर नहीं बताएगा। हम जो पढ़ रहे हैं ज्यादा अच्छा है ये। ठीक है, आई डोंट ट्रस्ट हिम एट ऑल। ठीक है। दादा आज भी करेगा, वहां पे लपेटेगा वो। बाद में देखेंगे इसको, पहले थोड़ा इसको पढ़ते हैं। हाँ, ये ट्रिक्स खेल जाते हैं और कई बार स्क्रिप्टेड इंटरव्यूज दे देते हैं, इसलिए। एनडीटीवी वाला है यार, एनडीटीवी वाला कैनाल को अगेंस्ट कांग्रेस। सीधी बात तो ये है, नेहरू क्यों गाली देगा वो? हाँ दादा, मैं वही कह रहा हूँ, ये स्क्रिप्टेड इंटरव्यूज भी लेते हैं कई बार, इसलिए प्रॉब्लम है। ब्लंडर 40, lethargic intelligence machinery and no planning. Despite the fact of unsettled borders skirmishes as far back as 1959 and the real possibility of war, there was glossy, inadequate defense preparation and no contingency plan in place, even assuming there had actually been no war. Common sense dictated that allowing for its possibility, alternate plans accounting for all contingencies should have been in place. There also required intelligence inputs on the Chinese preparedness, their strategy, and their weaknesses and strengths. While it seems China had sufficient knowledge on India on all aspects relevant to winning war against it, though through its network of agents. India's intelligence was woefully poor. Here are glaring examples. China declared unilateral ceasefire on 21st November 1962. However, even such an important announcement of China became known to the government belatedly, wrote Kuldeep Nayar. A cavalcade of cars moved to the Prime Minister's residence. Nehru had just woken up and was totally unaware of the Chinese offer. This was typical for our intelligence agencies and of the functioning of the government. Though the statement on the ceasefire had reached newspapers' offices just before midnight, the government was unaware of it. Even the official spokesman, whom the pressman awoke for a reaction expressing ignorance. That is what a way to fight a war, I thought. BG
Varghese wrote in The War We Lost. Around midnight, a transistor with one of our colleagues crackled to life as Peking radio announced a unilateral ceasefire and pullback to the pre-October line of actual control. Next morning, all the world carried the news, but AIR still had brave Jawans gamely fighting the enemy, as none had the gumption to awaken Nehru and take his orders, as the news was too big to handle otherwise. Indeed, during the preceding days, everyone from general to Jawan to officials and the media was turned into radio packing to find out what was going on in our own country. The above are only illustrative examples. When on critical matters you had no intelligence or prior information, what to speak of other matters? The life of our brave Jawans came cheap. Just dump them in the war without any proper protective gear or arms, or and without any intelligence on the enemy positions and preparation, with the strategic thinking and strategic planning itself being absent. Where was the question of intelligence to assist those processes? Blunder 41. Suppressing truth. People feel shocked when they learn of the background and the details of the India-China war because under the cover of national security interests, things have been hidden away from the public. Despite such a long lapse of time, wrote Brigadier J.P. Dalvi. The people of India want to know the truth but have been denied it and dubious ground of national security. On the dubious grounds of national security, the result has been an unhealthy amalgam of innuendo, mythology, conjecture, outright calumny, and sustained efforts to confuse and conceal the truth. Even the truncated NEFA inquiry, Henderson Brooks report, had been withheld, except for few paraphrases, exact extracts read out, Extracts huh, read except out. for a few paraphrased extracts read out to the Lok Sabha on 2nd September 1963. For some undisclosed reason, I was not asked to give evidence, despite being on the front line during the war. Before this body nor before this body nor to the best of my knowledge were my Repatriated. repatriated commanding officers. Delhi and others were taken prisoners by the Chinese and released in 1963. Like a dictator, Nehru kept the whole thing under wraps. Wrote Neville Maxwell. This was true of the handling of the boundary question with China, which was kept away not only from the cabinet and its foreign affairs and defense committees, but also from parliament until armed classes made it impossible to suppress. No democratic country remains so secretive. Both the UK and the USA, as also other democratic countries, make all official documents available after a lapse of certain years, as per their law, so that historians, academics, researchers, experts, leaders, and others can study them. This helps writing of correct history, drawing proper conclusions, and learning lessons from the future for the future. But in India, the leaders and the bureaucrats are ever afraid of their incompetence and dishonesty being exposed. They are bothered about their present and their survival. The future of the country is not their business. You ignore history and its lesson at your own peril, and hence to draw useful lessons for the future from the debacle. It is necessary to raise uncomfortable questions.
What was the nature of the border dispute? Why the dispute was not resolved through talks? Why didn't India settle it in 1954 itself at the time of signing the Panchsheel? Was Indian position justified? Did Chinese arguments have substance? Why did India change its maps in 1954? On what grounds? And were there solid grounds for India to be so adamant on its stand? Why was Chinese offer of a swap deal on McMahon Line and Aksai was not accepted? Why was the forwarded why was the forward policy adopted? Why the Indian defense preparedness was so poor? Had there been politicization of the army? Why was the Indian performance in the war so pathetic? What should be India's stand going forward? How to resolve the dispute? How to strengthen India's defense? Accountability should have been established and those responsible should have got their just deserts. The findings of the inquiry should have been made public along with the roadmap for the future. That's democracy. India-China War of 1962 was indeed independent India's most traumatic and worst ever external security failure. Any democratic country worth its salt would have instituted a detailed inquiry into all aspects of the debacle. But what happened in practice? Nothing. The government was brazen enough not to set up a comprehensive inquiry. Why let their own mistakes be found? Why punish themselves? Why be made to resign? Why vacate our positions? People don't deserve to know. It was an autocratic democracy. Don't disclose site. National interest. Although it was not national interest but pure self-interest that drove the decision. Sweep under the carpet whatever is unpalatable. Just put all the Palatable. blame on the Chinese. Sweep under the carpet whatever is unpla- Palatable. unpalatable. Just put all the blame on the Chinese and on few scapegoats. The above have been the above would be obvious from the following. During the lull in the war 24 October to 13th November 1962, this is what Nehru said in the Rajya Sabha on 9th November 1962. People have been shocked. All of us have been shocked by the events that occurred from October 20 onwards, especially of the first few days and the reverse reverses we suffered. So I hope there will be an inquiry so as to find out what mistakes or errors we committed and who were responsible for them. During the full period, Lal, 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 lal. in LULL, during the lal. lull period, India was making its preparations, and those in power in Delhi were sure India would give a befitting reply to the Chinese. But the subsequent war of 14 to 20 November 1962 proved even more disastrous. Sensing its consequence upon him, Nehru conveniently forgot about the inquiry. Although no inquiry was set up by the Indian cabinet or the government, the new chief of the army, General Chaudhary, did set up an operations review committee headed by Lieutenant General T.B. Henderson Brooks, aka HB, of the Indian that is HB, of the Indian Army, an Australian-born second generation English expatriate who had opted to be an Indian rather than a British citizen in the 1930s, with Premendra Singh Brigadier Bhagat. Ramendra Singh Bhagat, Victoria Cross, then commandant of the Indian Military Academy as a member. However, the terms of reference of the committee were never published. It had no power to examine witnesses or call for documents, and it had no proper legal authority. The purpose was to ensure it didn't morph into a comprehensive fact-finding mission that could em, embarrasses Embarrassed. embarrass the government. Reportedly,
Its terms of reference were very restrictive, confined perhaps to only the four corps operations. However, going by the fact that the report referred to as the Henderson-Brooks report or Henderson-Brooks-Bhagat report or HBB report submitted in April 1963 of even such a handicapped committee has been kept classified and top secret even till today signifies that the committee went beyond its limit terms beyond its limited terms of reference, did some very good work and managed to nail the root causes which the powers that we wanted to remain hidden which the powers that we wanted to remain hidden. Perhaps the HB report had been made public. Nehru would have had to resign, एक wrote मिनट, Kuldeep Nayar. एक मिनट। मोदी साहब 9 साल से प्राइम मिनिस्टर है, मोदी साहब कौन सा वहां पर उखाड़ रहे हैं? मोदी साहब पब्लिश कर देना उसको, क्यों नहीं करते? बहुत बड़े देशभक्त बनते हैं तो। बिल्कुल ज़्यादा करनी चाहिए इनको। अरे तुम पार्टी के हिसाब से नहीं करो कि लेकिन पब्लिक को तो रिलीज कर दो कि सच तो मालूम चल जाए। Nehru would have had to resign, Kuldeep Nayar wrote Kuldeep Nayar in Beyond the Lines. In September 1970, General Thapar, who headed the army at the time of the war, approached Indira Gandhi to allow him to see the HB report. She did not, however, concede the request. When I was a Rajya Sabha member from 1996, I wanted the report to be made public. The government refused to do so in public interest. My hunch, my hunch was, my hunch was that the report had had so severely criticized Nehru that the government, even headed by the BJP, did not want to face the public anger that could have been generated. I used the RTI facilities in 2008 when I wanted access to the Henderson Brooks inquiry report, but didn't succeed. As per the Hindustan Times report titled Incorrect Maps Given to China Led to 1962 War of 22nd October 2012. India's India's presented contradictory maps of the on the McMahon line to China in the 50s and in 1960 and 61, which ultimately led to the war with China in 1962. The revelation was made by Wajahat Habibullah, former Chief Information Commissioner (CIC), perhaps the only civilian besides defense secretaries to have officially accessed the top secret Henderson Brooks Bhagat report. We had given maps with serious contradictions on the layout of the McMahon line to China. This led the Chinese to believe that one of the pickets being controlled by our forces in the northeast was theirs, according to one of the maps given to them by us, said Habibullah, declining to name the picket along the Arunachal Pradesh border with China accordingly. On October 20, 1962, the Chinese army crossed over to occupy the border picket, leading to open hostilities. Habibullah got the go-ahead to access to the report after journalist Kuldeep Nayyar's appeal under the RTI Act in 2005, or was it 2008, to get a copy of the report, wrote Claude RP. Unfortunately, historians and researchers have never been allowed to access the original materials to write about Nehru's leadership during the troubled years after independence. It is tragic that the famous Nehru papers are jealously locked away in the Nehru Memorial Library. They are, in fact, the property of his family. I find it even more regrettable that during its 6 years in power, the NDA government, often accused of trying to rewrite history, did not take any action to rectify this anomaly. Possibly they were not interested in recent history,
As a result, today history lovers and serious researchers have only the 31 volumes published so far of the selected works of Jawaharlal Nehru, covering the period 1946 to 1955, to fall back on. This could be considered a partial disclassification of the Nehru papers, except for the fact that the ending has always Editing. been undertaken by Nehruvian historians, making at times the selection tainted. Tainted. The other problem is that those volumes cover only the writings or sayings of Nehru, notes or letters of other officials or dignitaries which triggered Nehru's answers are only briefly and unsatisfactorily resumed in footnotes. बाप रे. ठीक है दादा. तो गांधी जी मतलब मोदी जी भी चमचा है, फिर गांधी बिना मतलब नेहरू गाली देता रहता है. अरे गांधी सब पे सवार है पूरा वॉल्ट. दादा, गांधी सब पे सवार है, चढ़ा हुआ है गांधी सब पे, लदा हुआ है. झूठा नहीं का, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ऐसा है वैसा है. खोलो ना, हिम्मत है तो दिखाओ पब्लिक को. एम दादा, वीबी दादा, आप अपने वाले में शो करो. अभी ये एम दादा पढ़ेंगे. 6 हो गए, 6 बच गए हैं. 6 मैंने थोड़ा सा 15 मिनट एक्स्ट्रा लगा दिए. हाँ, मैं शेयर करता हूँ, तुम वो कर दो, हटा दो. हाँ, 42 से स्टार्ट करना है. 42 से तो हाँ दादा. एक मिनट. संदीप जी नमस्कार, थोड़ा बताइए, कुछ बोलिए ना, हम लोग हो रहा है मामला. हाँ जी, नमस्कार जी. तब तक आप कल ही खोल दो सबकी. मुझे ना काम भी करना पड़ रहा है साथ साथ. मेरी मम्मी. हाँ, मैं भी काम नहीं करने जा रहा हूँ. कि ये देखो कितना हमारे साथ में बेईमानी कर रहे हैं गवर्नमेंट. बाप रे. हाँ जी. Blunder 42, Himalayan blunders, but no accountability. Such was the economy practiced in sharing information with the public, the media, and even the parliament. That such was the economy with truth in Nehru's democratic India. That the blame for debacle in the India-China war came not on Nehru, the principal person responsible, but on Menon. Such was the ignorance of the opposition that Kripalani and others asked Nehru to take over the defense portfolio from Menon. The poor fellows had no idea that the disaster, both in the foreign policy and the defense, was actually thanks to Nehru. Menon was only a protege of Nehru, did his bidding, and became defense minister only in 1957. Krishna Menon was reluctantly made the scapegoat. Chief of Army Staff Harper resigned. BM Kaul resigned, but not Nehru, wrote Brigadier J.P. Dalvi in his book Himalayan Blunder. When the inevitable disaster came, Nehru did not have grace or courage to admit his errors or seek a fresh mandate from the people. He did not even go through the motion of resigning. He merely presented his trusted colleagues and military appointees as sacrificial offerings. Instead of gracefully accepting responsibility for erroneous policy, the guilty men sought alibis and scapegoats. In any developed democracy, the government would have been replaced instead of being allowed to continue in office and sit in judgment on their subordinates. We must also learn that a democracy has no room for proven failures. This is not a matter of sentiment. Mr. Chamberlain was removed after Hitler invaded France in May 1940 with Cromwell's classic plea, "For God's sake, go." Mr. Anthony Eden was forced out of office after the disastrous Suez Adventure of 1956. Not only that, Nehru was not even willing to remove Defense Minister Krishna Menon. Nehru told Yashwantrao Chauhan, who had come to Delhi to attend a meeting of the chief ministers, "You see, they want Menon's blood. If I agree,
tomorrow they will ask for my blood. Finding it difficult to resist pressure, Nehru played his old game of a threat of his own resignation. Nehru had threatened to resign on several earlier occasions to have his way safe in the knowledge that people would back off, but not this time. When he found that the trick won't work and he himself would have to go, he quickly backed off and asked Menon to resign. Meanwhile, Indira Gandhi had approached Vice President Zakir Hussain to persuade her father to drop Menon, as that was the only way to appease the enraged public and the media. Nehru actually remonstrated that those who criticized him and later even took revenge against some, for example, Dharampal, a highly regarded thinking scholar and author who had addressed an open letter to Nehru critical of the humiliating 1962 war debacle, was jailed by Nehru. Here is Israel and Golda Meir's example in sharp contrast to that of India and Nehru's. After its decisive victory against the joint Egypt, Syria, Jordan, Iraq army in 1967 in the Six-Day War, following its victories in 1948 at the time of its birth, and later, Israel was a little laid back and unprepared, thinking Arabs wouldn't dare to attack again. Also because Israel had nuclear weapons by then to deter the Arabs. The attack of 1973 therefore came as a surprise to it. In 1973, Yom Kippur, the holiest day of the year for the Jews, fell on 6th of October. It is on that day when Israel and the Jews the world over were busy observing Yom Kippur that the Egyptians and the Syrian armies launched a surprise attack against Israel in the Sinai Peninsula and the Golan Heights respectively. Still after the initial setbacks and panic, it rose to the challenge and repelled the combined attack, emerging triumphant. The war came to be known as the Yom Kippur War. Golda Meir was the president then. Even though Israel's ultimate victory was spectacular and decisive, they immediately instituted an inquiry to fix responsibility for the initial setbacks and the panic reaction and the lapses that led to the attack coming as a surprise. The preliminary report took just a few months and was released on 2nd of April 1974. It actually named names of those responsible. Several top-ranking staff were asked to resign. Golda Meir was not named, but taking overall responsibility. She resigned on 10th of April 1974 after mere 8 days of release of the report, which was only a preliminary report. This, even though Israel, under Golda Meir, had actually won the war decisively and turned the tables on the Arab countries that had attacked them. Contrast the above with Nehru and India. Even though India lost pathetically in the 1962 India-China war, Nehru government instituted no inquiry, and Nehru did not even make a gesture of an offer to resign. What was the alibi offered to the gullible public? The nation was told that the borders were well settled and that the unprovoked attack from China was what the innocent India got for doing all that good to China. Even Rajaji, otherwise in opposition to Nehru by then, blamed it on the treachery of the Chinese. Perhaps at that time Rajaji did not know all the facts. You do a Himalayan blunder, but you receive sympathy. Nehru, the poor chap, was stabbed in the back by the Chinese. How publicized misinformation can turn the scales. Everyone remembers a popular song of those times, penned by poet Pradeep and sung by Lata Mangeshkar. It went like this: "ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में ले भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी, जरा याद karo kurbani." The song is invariably played on 15th of August every year. Lata told in an interview when she had sung that song in Nehru's presence, Nehru had wept. So sensitive was he. Again, additional praise. But who was responsible for his own tears and tears in the eyes of crores of Indians? In the first place, had sensible policies been followed, this huge tragedy that befell the nation and the consequent tears could have been avoided. Blunder 43. Delayed liberation of Goa.
Goa, Daman and Diu, and Dadra and Nagar Haveli, collectively known as the Estado da India, continued to remain occupied by Portugal after independence. They covered an area of about 4,000 square kilometers and a population of about 6.4 lakh, comprising about 61% Hindus, 37% Christians, and 2% Muslims. India finally carried out air, sea, and land strikes under the armed action codenamed Operation Vijay and liberated all the Portuguese occupied Indian territories in December 1961 after a two-day operation. Dadra and Nagar Haveli were liberated earlier in 1954. Why should it have taken 14 long years after Indian independence to throw out the Portuguese in 1961? Couldn't Nehru get a small territory vacated? During a long discussion on Goa in the Foreign Affairs Committee in 1950, Sardar Patel kept to himself listening to the various tame alternatives. Then suddenly at the end, shall we go in? It is 2 hours' work. Patel was very keen to fulfill the assurance given to the Goa Congress in his letter of 14th of May 1946, promising freedom from foreign domination. He was all for using force to settle the matter quickly, but Nehru was much too soft to take any effective steps. Patel felt exasperated. Wrote Durga Das. Gandhi advised the people, that is Indians, of the French and Portuguese possessions in India not to revolt against their overlords on 15th of August, but to trust Nehru to do for his kith and kin what he was doing to assist the Indonesians to become free. Indirectly, Gandhi was voicing the fact that he differed from Patel's view on Goa and Pondicherry and other foreign enclaves, and agreed with Nehru's that the question of their liberation could wait for some time. If Sardar Patel's advice had been heeded, Goa would have been part of the Indian Union by 1948 itself. However, with pacifists, with pacifists like Nehru and Gandhi, desired action could always wait, and self-deluding talks substituted for decision and action. Left to Gandhi and Nehru, and had Patel not been on the scene, while Hyderabad and Junagadh would have been another Kashmir of Pakistan, there would have been dozens of independent princely states sucking up to Britain or Pakistan and becoming permanent headaches, commented Sitaram Goel, then prior to Goa's annexation, and the fact that Pandit Nehru has not ordered the Indian army to march into Goa or amalgamated the French possessions into an Indian union without further reference to France is also positive proof that he is not an Indian patriot. I am convinced that not a fly will flutter in France if the French possessions are integrated forthwith into India. Portugal will most probably put up a fight over Goa, but again, I'm sure no other Western nation will show her much sympathy or give her any support. Goa under the Portuguese and the French possessions would de jure, sorry, Goa under the Portuguese and the French possessions without a de jure transfer are only convenient excuses for Pandit Nehru in his communist game of perverting Indian nationalism and setting it up against the Western camp. If Goa and the French possessions are taken by India, he will not know how to harangue against the North Atlantic Alliance day in and day out. कितना कमीना था ना ये। बैठा हुआ था चुपचाप। Blunder 44. Nehru's no to nuclear arms. The then US President John F. Kennedy was an admirer of Indian democracy, and when he learned that China was on its way to detonate a nuclear device, he wanted that it ought to be a democratic country like India and not communist China, which should have nuclear capability. The the Kennedy administration was ready to help India out with nuclear deterrence, but Nehru rejected the offer. Currently, India has been canvassing support from various countries to become a member of the nuclear suppliers group, in vain so far. Had Nehru gone along with Kennedy's advice,
India would have detonated a nuclear device well before China. Had that happened, not only would have been a member of the NSG long ago, but China would not have dared to attack India in 1962, nor would Pakistan have taken liberties to attack India in 1965. Former Secretary Raj Gotra disclosed Kennedy's handwritten letter was accompanied by a technical note from the chairman of the U.S. Atomic Energy Commission setting out the assistance his organization would provide to Indian atomic scientists to detonate an American device from atop a tower in the Rajasthan desert, the release said. In the letter, Kennedy had said he and the American establishment were aware of Nehru's strong views against nuclear tests and nuclear weapons, but emphasized the political and security threat China's tests would spell for Nehru's government and India's security. It said, adding that the American leader's letter emphasized that nothing is more important than national security. Gandhian Ahimsa had not only totally vitiated Free India's approach to retaining its own freedom by strengthening its defense and external security, but had also provided excuses to pacifists like Nehru to not fulfill their basic responsibility as Prime Minister of protecting India under the garb of the hypocrisy of high moral principles and being flag bearers of world peace. Nehru failed to grasp the deterrence value of nuclear weapons. What is surprising is what were his cabinet colleagues and other leaders of the ruling and the opposition parties doing? Were they mere mute and spineless witnesses to whatever the autocratic and undemocratic Nehru chose to do? क्या यार शिट. बात तो सही बोल रहे थे. तो अटल बिहारी वाजपेयी भी तो थे. हाँ तो वो वैसे ही थे ना. He was also Nehruvian. To take Kargil into account. तभी तो कारगिल हुआ था. वो तो हाँ और तो ज्यादा इसीलिए तो तैयार था बोल कि रहा हूँ. हमारी पाकिस्तान से दोस्ती हो जाए, पाकिस्तान से दोस्ती हो He जाए. was also like that. Blunder 45, no settlement with Pakistan. Nehru failed to reach an accommodation with Pakistan during his lifetime, making our western and northwestern borders sensitive, costing us heavy to secure them. The crux of the Indo-Pak dispute was Kashmir, and Pakistan was unwilling for settlement and for no war pact till the Kashmir issue was resolved. Kashmir would have been a non-issue had Nehru allowed Sardar Patel to handle it, or had Gandhi not made Nehru the first PM. It was Nehru's responsibility to resolve the issues he had created. Nehru unfortunately expired, leaving both the issues, Kashmir and Indo-Pak settlement, unresolved. The Indian the India-Pakistan Indus Water Treaty of 1960 on sharing of waters from the six Indus system rivers was an unprecedented by any nation generous giveaway, like the India-China Panchsheel Agreement of 1954 by Nehru to Pakistan at the cost of Jammu and Kashmir and Punjab, with no reciprocal take. It didn't occur to Nehru to make it conditional upon Pakistan settling on Jammu and Kashmir and other matters to ensure secure western and northwestern borders, intended to palliate India's alarm at Pakistan's entry in the कौन सा है साउथ ईस्ट अटलांटिक South ट्रीटी East ऑर्गेनाइजेशन. Atlantic Treaty Organization सर in एशियन, अटलांटिक 1958. नहीं, एशियन, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. Southeast Asian Treaty Organization, sorry, intended to palliate India's alarm at Pakistan's entry into Southeast Asian Treaty Organization in 1958. General Ayub Khan proposed Security Alliance Pact with India to Nehru. Nehru summarily and scornfully rejected the proposal, remarking, "Security alliance against whom?" ये भगवान क्या यार.
ये किसको विश्वास करता था? ये करता क्या था आदमी? बाप रे। कुछ नहीं। Blunder 46, responsible for 1965 war too, in a way. India's lack of pacts with powerful countries to back it up in case of external attacks. Nehruvian policy fad of non-alignment resulted in it being non-aligned with its own national security interests. Its poor showing in the 1962 war, the fact of its continued dependence on the outdated armaments of World War II vintage, the exposure of its gross deficiency in modern military hardware, and little effort, even post-1962 war, to strengthen itself, prompted Pakistan to take advantage of the situation and attempt to grab Kashmir militarily in 1965. India and Nehru did not wake up even as Pakistan equipped itself with first-class modern military hardware from the USA, following its pact with the anti-communist Western Bloc. Shastri was relatively a new entrant as PM, and he had hardly had time to come to grips with things, crying for attention, let alone tackle the huge Nehru legacy of untackled problems. The blame for the fact that Pakistan dared to attack India on account of its own unpreparedness, therefore, rests squarely with Nehru. Further, as per the US advice, had India gone nuclear or had Nehru reached an honorable settlement with Pakistan, Pakistan would not have dared to attack India. Blunder 47, International record in secure borders. Nehru's policies resulted in thousands of kilometers of all land boundaries of India, whether in the north or east or west or northeast or northwest, becoming sensitive and insecure, requiring massive investments to protect them. What is noteworthy is that there were enough opportunities to peacefully settle the boundaries with China in the 1950s and the early 1960s, and with Pakistan too. Yet most irresponsibly, Nehru failed to encash on them. Thanks to Gandhi's choice for the first PM of India, India is only a country of its size in the world with a long unsettled border with a giant neighbor and disputes with another. Rather than solving a plethora of severe problems crying for attention, the Nehruvian era added new problems, and not just added them, made them more difficult and almost insolvable, the most severe being securing the long borders. Thanks to the Himalayas, the north from time immemorial has been the most secure natural boundary. Nehruvian policies managed to make them insecure. Northeast has been made insecure thanks to gross misgovernance, corruption and insurgency, and to Nehru turning a blind eye to adversely changing demography thanks to proselytization, proselytization and to Muslim migrations from East Pakistan, Bangladesh. Finished. Finished. Thank you. Now let us discuss. बंद कर देता हूँ. अगला है, देखो ये है फॉरेन पॉलिसी का, वो हम कल करेंगे. फॉरेन पॉलिसी जी, वो कल करेंगे. बोलिए साहब लोगों. क्या बात है, ये कौन है भाई? बोलती बंद हो गई. क्या बोलेंगे यार, सही बोलते हैं. अब फिर पब्लिक दादा तो पेपर छापता नहीं है सब, कोई मतलब आर्टिकल नहीं लिखा जाता, कोई छापता भी नहीं है. जी सर. जय सर. जय भारती सर, बोलिए. क्योंकि मैं कई बार सोचता हूँ कि हमारे देखो अब जो सोल्जर्स ने अपनी जान दी, मेरा उनसे पर्सनली कोई रिश्ता तो नहीं था, लेकिन एज अ भारतीय, एज अ हिंदू, मैं कहता हूँ हमारे एंसेस्टर्स थे वो, ठीक है. इसके अलावा जो हमारे एंसेस्टर वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 ब्रिटिश फोर्सेस में इसलिए जाके लड़े कि शायद हमारी कंट्री को
आज़ादी मिल जाएगी। आप उन हमारे भारतीय सोल्जर्स का सोचिए जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 में हाइफा को लिबरेट कराया था। उनके पास क्या थे? घोड़े, ठीक है, भाले, लांसेस। क्या था उनके पास अगेंस्ट द ऑटोमन टर्किश आर्मी की फुली ऑटोमेटिक मशीन गन्स? वो क्यों गए वहां पर? क्या मिला उनको? इसीलिए कि शायद ये कंट्री जो है, भारत जो है, वो स्वतंत्र हो जाए। और आज भी इस बात को कितनी मेथोडिकली प्लानिंग से दबा के रखा हुआ है और ऐसी प्रोजेक्शन कर रखी है लोगों की, जिसकी वजह से आज भारत के सर पे कितने खतरे मंडरा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। आपने जो ये बात कही ना, किसी ने मेरे ख्याल गांधी जी से भी ये पूछा था, अरे गांधी जी ने क्यों सपोर्ट किया एलाइज वर्सेस एक्सेस इंडियन सोल्जर चाहिए, क्योंकि वो तो अहिंसा के पुजारी हैं। तो उन्होंने क्यों अलाउ किया कि इंडिया के सोल्जर सेकंड वर्ल्ड वॉर में जाएं, या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो पहले की उनसे बात है, सेकंड वर्ल्ड वॉर में जाएं, राइट। बाद में जो नेहरू जी 1962 में गांधी जी की पॉलिसी को फॉलो करते हुए कि हमें आर्मी की जरूरत नहीं है, पुलिस इज इनफ फॉर मी। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, है ना? आपको समझ लगी मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ बिल्कुल, हाँ। जैसे ट्रेविस्टी हमारे साथ हमेशा ऐसा होता रहा है। वो दो मुंह से बात करते थे ना, वो बोलते कुछ थे करते कुछ थे, उस समय रोकना चाहिए था। बिल्कुल गांधी जी ने कितने लोग सेकंड वर्ल्ड वॉर में मरवा दिए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाले वाले तो बेचारे, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ने गए, उनकी तो मजबूरी थी, उन्हें खाना खाना चाहिए था। बहुत सारे मुझे पता है कि जो पंजाब हरियाणा के ईस्टर्न इस तरफ के लोग थे जिनके पास जमीनें कम थी, बंगाल के इधर के लोग, उनके पास कुछ उनको उनको तो खाना चाहिए था, उनको तो नौकरी चाहिए थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तो इंडिया की इतनी बुरी हालत थी कि इंडिया के लोगों की किसी भी किस्म की नौकरी मिल जाए, अंग्रेजों ने दे दे, तो वो करने को तैयार है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी तो उससे भी ज्यादा बदतर हाल थी, पर फिर भी जब इंडिया के गांधी जी से लीडर ये कह रहे हैं कि अंग्रेज हमें आजाद कर देंगे, आप लड़ने जाओ, वो उनकी लोग अहिंसा मान गए। पॉलिसी। सीरियसली आई मीन, हाँ, सोचो आप, जो एक गांव का एक छोटा सा सिपाही है, वो तो अपने लीडर्स को ही देखेगा। उसके जो पॉलिटिशियन लीडर हैं, जो बिल्कुल बिल्कुल 18 साल का बच्चा जो फौज में भर्ती होने जा रहा है, उसने क्या सोचना, उसने कहना मेरा कंट्री आजाद हो जाएगा, चलो आई विल बी इंडिपेंडेंट। मैं परसों एक क्योंकि आर्टिकल पढ़ रहा था दैट ही वेंट टू साउथ अफ्रीका एज अ सर्वेंट ऑफ वन मुस्लिम ओनली। वहां पर जाके कोई मुसलमान ही लेके गया था। वहां पर दो भाइयों के बीच में झगड़ा था, उसको इसको सेटल करना था, क्योंकि यहाँ पर इसको ज्यादा अंग्रेजी बोलनी आती नहीं थी। यहाँ पर ये वाज नॉट सो मच सक्सेसफुल एज बैरिस्टर। क्या अंग्रेजों में अभी सर अंग्रेज चीजें खोज के निकाल लेते एजेंट हमारे अंदर से। सबसे बड़ी बात तो यही है मेरे ख्याल में, व्हाट एवर प्रॉब्लम वी आर फेसिंग टुडे, व्हाट एवर इज एलिंग इन इंडिया इज बिकॉज ऑफ दीज थ्री कैरेक्टर्स। पाकिस्तान का हो या मान लीजिए चाइना का हो, जो भी हो, हाँ जी, माउंटबेटन, गांधी विविधता। और ये नेहरू तीनों रिस्पॉन्सिबल थे पूरे हिंदुस्तान का सत्यानाश करने के लिए, और क्या है। मैं आपको एक और बात बताता हूँ अगेंस्ट इसकी। 1962 की जो लड़ाई हुई ना, उसके बाद क्या हुआ कि इंडियन गवर्नमेंट इतना डर गई कि दे ओपनड अप जो ऑफिसर कैटेगरी की इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में, उन्होंने अपने सारा का सारा खोल दिया, कोई भी आ जाए विदाउट एनी, बिना किसी देखे समझे। तो उस टाइम में इतने सारे लोग जिनके पास क्वालिफिकेशन नहीं थी, दे बिकेम ऑफिसर्स बिटवीन 1962 एंड 1965। और बहुत सारों की बाद में कोर्ट मार्शल करके निकाल दिया। बहुत सारे तो फिर 65 की लड़ाई में लड़के ऊपर ऑफिसर बन गए, बहुत सारे। और इसके रिपरकर्शन इतने ज्यादा हुए 1962 की लड़ाई के कि हम आज तक झेल रहे हैं। मतलब उसमें भी दिमाग नहीं लगाया इन लोगों ने, कुछ भी, चलो किसी को भी आ जाओ, वाह। और वो भी ऑफिसर कैटेगरी में, जिसके पास सर आपको याद होगा 62 के बाद
चाइना की लड़ाई में होता जब ना। जिसके पास मैट्रिक सबऑर्डिनेट है जुडिशियल सर्विस का पहला एग्जाम नहीं था, हाई कोर्ट में इंटरव्यू लिया जाता था और कोई भी मतलब जो तैयार था वो चला जाता था। मतलब याद है सर आपको? तो बाद में बना ना ये लोअर जुडिशरी का जो एग्जाम, तो बाद में बना। उस समय तो हाई कोर्ट से ही रिक्रूटमेंट होता था। अच्छा, पे स्केल बेसिक was 250 rupees, so people like us to go there. We were earning more than that. हमें अब सोच भी नहीं हम सकते कि एक ब्लंडर की वजह से कितनी We are all जनरेशंस खराब talking हुई। about it. And once again, the talk is all about what went wrong, what could have been, who was to blame. Books about the war have titles like The Himalayan Blunder, India's China War. It's a war that this country ideally would love to forget, but cannot forget, because it's a war that's etched on our memories as one of the saddest chapters of our independent history. And it's sadder still that because of that overwhelming sense of failure in that war, we tend to forget, overlook, and sometimes almost deliberately ignore the one chapter. In fact, there were a few chapters of great bravery and fight back by Indian soldiers, but one chapter that I think is unparalleled in modern military history, modern post-Second World War military history. And that was the Battle of Rezangla on 18th of November 1962. I'll give you a brief history. Charlie Company of a battalion called 13th Kumau was strung, divided in several platoons on one ridge of 2 kilometers, protecting the airfield of Chushul, which was vital if India was to hold Leh or Ladakh. It was attacked on the morning of 18th April by maybe 5,000, 6,000 Chinese with heavy artillery support, and a ridge and a crest behind this ridge prevented Indian artillery from being able to support these Jawans. And what did these Jawans do? They fought, believe it or not, to last man, last out. That's an expression you hear in movies, that expression you read in war comics, but that is something that actually happened in the Battle of Rezangla on 18th of November 1962. Of the 120 men and officers of this company, 114 died, 5 were taken prisoner as wounded, they all escaped, and 1 was sent back to tell the story of the battle to the rest of the world. And who sent him back? This company's most remarkable commander, Major Shaitan Singh, who got a Paramveer Chakra for leading this battle. I am today in Rewari, generally the area from where these Jawans came, because it was a Kumaon battalion, but this was an Ahir company from Rewari in Haryana. With me today in this very special edition of Walk the Talk, I have 2 of those 6 survivors. In fact, only 4 remain with us now. With me, Honorary Captain Ramchandra Yadav. Thank you. हवलदार निहाल सिंह जी, आपका वॉक टू टॉक पे स्वागत है। और आपसे हाथ मिला के लगता है कि हमारी को भी भगवान ने आज के दिन के लिए कुछ खास एक तोहफा दिया है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप। बहुत छोटे थे आप जब ये लड़ाई हुई? हाँ बिल्कुल, तो यंग थे साहब, बच्चे अब थे। तो उस टाइम तो 79 किलो मेरा वजन था उस टाइम। अरे की तुम में जी हाँ। 79 मतलब 180 किलो वजन। और आप दोनों मेजर शैतान सिंह के बिल्कुल साथ थे। हाँ बिल्कुल, आप उनके रेडियो मैन थे। हाँ। और मैं मेजर शैतान सिंह का जो बॉडीगार्ड LMG था ना, LMG लेकर जो सरकार ने, हमारी सेंट्रल सरकार ने लागू की थी। ये कंपनी में 9 LMG होती है। कंपनी कमांडर की प्रोटेक्शन के लिए LMG हमारी सरकार ने लागू की थी। उस पर साहब में मेरे सामने ले रखा। जी हाँ। और आपने सारी लड़ाई देखी वो? पूरा लगा। बिल्कुल सीन अभी भी हमारे सामने। सुबह 2 घंटे से नींद नहीं आती जब वो सीन रोजाना सीन तो 18 नवंबर का जो सीन है। बिल्कुल
और वो जैसे अब 50 साल हो गई कंप्लीट अभी 11वें में, लेकिन अभी भी ये है कि भाई कल परसों हुई। जी हाँ। और सारे साथी आपके 114 नाम यहाँ पे हैं। ये पूरे हैं। पूरे ये कभी हुआ है कि 120 में 114 मारे गए? ये तो वर्ड में वर्ल्ड में नहीं। और 5 आप जैसे जो गोली लगे हुए, आपको कहाँ कहाँ गोली लगी? ये हाथ में, दोनों में, दाहिने हाथ में लगी और बाएं में, दोनों हाथ में गोली लगी? दोनों हाथों में लगी। ये यहाँ गोली लगकर ये निकल गया, ये हाथ टेढ़ा हो गया 50 साल पहले, और वहाँ भी लगी। और ये यहाँ पर ये लगकर और ये निकल गई। ऐसे एलएमजी का फायर कर रहा था, फिर ये तो वो लगे स्प्लिंटर लगा, जैसे फायर हुआ ना, जो खेल को वो धूल से वो मिट्टी वो लगी, वो लगी। और ये हार्ड मेरा वो एक पत्थर इतना मोटा लगा, ये यहाँ पर, ये देखो आपके भी लगी। ये ऊपर हो गया, स्प्लिंटर लगा। और आप, तो आप मुझे बताएं, आप एलएमजी संभाले हुए थे कंपनी कमांडर की प्रोटेक्शन के लिए, और आपकी गोली लग गई, फिर क्या हुआ? आपने एलएमजी चलानी बंद हो गए? एलएमजी तो मैंने साल वाले पर जो अपने ब्रिज ऑपरेशन नगर पे ना, उसी टाइम गोली लगते ही पीछे खींच कर फेंक दिया, अगा दुश्मन के काम नहीं आएगा। फिर उन्होंने हमारे मेरे मोर्चे पर, मैं मोर्चे में बैठ गया, आसमान में जैसे उड़ान कर रहा है, इतना दर्द हो गया शरीर में, तो गोली तो जलाती है ना खून को। जब उन्होंने चादर ऊपर रखी कुछ देर बाद में, और फिर उन्होंने सोच लिया कि भाई कोई हरकत नहीं आ रही, तब वो मोर्चे से आप शायद मर गए। हाँ, तब वो मोर्चे से बाहर निकाला, पकड़ कर खींच के बाहर निकाला। और फिर अपने वहाँ पर बात वो मेरा नाम पूछा, इंग्लिश में ही भाषा ऐसी जो पूरे वर्ल्ड में चलती है, व्हाट इज योर नेम? सर माय नेम इज निहाल सिंह। हमारे सीओ साहब का नाम पूछा और ब्रिगेड कमांडर साहब का, मगर नो, हम लोग मिजू हिल में हम 3 साल रहे मिजू हिल में, तो मिजू भाषा हमको बहुत आती थी। उस समय मिजू भाषा और उनकी भाषा मिलती है इन वालों को। मैंने बोल दिया नो, हम लोग हमें कुछ नहीं मालूम। मिजो लोग तो उन्होंने ट्रेन किया था। फिर उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, फिर बोले यहाँ और यहाँ खड़ा हो, अब वहाँ ले चल कर आपको और यहाँ क्यों करेंगे? मगर हाँ, मगर जानता तो मैं सब कुछ हूँ, मेरे दिमाग में था भाई ये। फिर वो ले गए, आहिस्ता आहिस्ता, ऑक्सीजन की कमी थी, वजन ज़्यादा था, ऐसे ऐसे यूँ करके दोनों हाथों से 18,000 फुट की ऊंचाई थी, 18,300 की ऊंचाई से, और वो बर्फ पड़ रही थी बहुत। हाँ, बर्फ तो बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, बहुत हवा तेज थी। हमारे पास तो ये फिर ताकत के हिसाब से, जब जैसे ताकत थी ना शरीर में, उस टाइम ताकत थी, उस वजह से बच रहे थे, वरना तो कपड़े वो हमारे कोई बंदोबस्त अवेलेबल नहीं था। तब वो अपने पोस्ट पर ले गए, करीब 5 बजे मैं उन्होंने अपने पोस्ट पर ले गया। उनका एक झील ऐसे पड़ता था, उसके साथ ऐसे रोड था, और उनकी तरफ इस शाखा में पहाड़ थे, हमारा तो ये ऊँचा था, और एक नाला यूँ आता था, एक यूँ आता था। उनके जो झील के सामने पहाड़ों की शाखा ये थी, मैंने खुद देखा है। उनका आर्मी का पूरा डिफेंस जो से ये मतलब आरती का और फेडरल सेना का पूरा डिफेंस था। आप निकले कैसे वहाँ से जब आप पकड़ के ले गए? वो निकला तो मैं इसलिए, जो संतरी जो थे ना, वो मेरे ऊपर मेरे को देख लेते थे, और फिर आहिस्ता से ना यूँ बातचीत करते, पता नहीं वो भाषा में अपने क्या बात करते थे, ऐसे यूँ घूम रहे थे दोनों। अंधेरा हो गया, भगवान ने दिमाग दिया कि भाई यहाँ पर तो मरेगा, देखा जाएगा, इनके पास से निकल कर चल, अगर पकड़ लेंगे तो मार देंगे, नहीं तो फिर पीछा छूटेगा। मैं वहाँ से इस हाथ को ऐसे पकड़ कर और यूँ आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से निकल गया। तो मतलब रहे अहीर का हीर ना, हिम्मत नहीं छोड़ी। तो रहेंगे तो अहीर, और दुश्मन को हम ठोकर से मारते सर उस टाइम, लेकिन ये तो हथियार की बात थी। जब हथियार वो नाकाम में हुआ हाथ, कैसे चलाते हैं? फिर क्या करें? अच्छा, चारों तरफ से अकेला रहेगा तो एकदम 15 साल तो ग्रेनेड फेंकने की भी कोशिश की, हाथ वो ग्रेनेड तो फेंकता, प्रेम करके रख रखे थे, लेकिन फिर कैसे निकले? अगर एक हाथ भी कामयाब होता ना, तो लीवर पर काबू करके और बूट को खोल कर ना इसमें फंसा लेता उंगली में। जंतर तो हम सबको ज़्यादा ट्रेनिंग तो हमारे उस्तादों ने बहुत कुछ हमको दी थी, और उसी से हम कामयाब हुए। और हमारे तो जो शहीद हुए ना, बहादुरी हमारी सरकार ने क्या दिया, वो तो हमारे 114 के 14 बहादुरी के हकदार थे। हमको चाहे मेरे इनको भी नहीं दिया, एक भी गोली नहीं बची थी, गोली नहीं बची, गोली खत्म हो गई थी। ग्रेनेड जरूर था मेरे पास, वो हाथ कामयाब नहीं है। India's #1 news app.
just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now. दादा अब मैं एक चीज़ यहाँ पर बोलना चाहता हूँ सबको। ये शेखर गुप्ता अंग्रेजी बोलने वाला, एप्पल का आईपैड यूज़ करने वाला, इसका इंटरव्यू लेने का स्टाइल देखा? इसने एक सवाल किया और दोनों पर फेंक दिया। कौन शुरू करेगा? वो कप्तान, एक कैप्टन है और एक और उसका जूनियर है। अरे भाई इतना तो प्रोटोकॉल कर कि पहले कैप्टन से बात कर। क्या कप्तान साहब आप बताओ, फिर आओ इसके ऊपर। इतनी इंपॉर्टेंट टेस्टिमोनी है फॉर द पोस्टेरिटी कि देखो ये हमारे जवान, ये हमारे एंसेस्टर थे, गोली लगने के बाद भी एक सवाल लिया और बीच में फेंक दिया। फिर ये एप्पल का आईपैड लेकर अंग्रेजी बोलना शुरू हो जाते हैं। ये इनका दिमाग है। दिस इज द वे देयर प्रेजेंटेशन इज। जी भारती साहब, यही तो इसीलिए तो मैंने प्रेस्टिट्यूट्स कहते हैं ना, जो जिद्द लुटियन जोन, दिल्ली लुटियन जोन के जितने भी हमारे पत्रकार जर्नलिस्ट हैं, सागरिका घोष, राजदीप सरदेसाई, गुप्ता साहब, बरखा दत्त और कितने ही ऐसे, ये सारा के सारे प्रिविलेज लोग हैं जो अपने लुटियन जोन्स के, क्योंकि इनके बाप दादा नेहरू के टाइम से इनके साथ रहे हैं, उनकी वजह से इनकी जॉब्स हैं। और अब इनके माता पिता ने भी वही किया नेहरू के टाइम, अब ये कर रहे हैं, अब इनके बाद इनके बच्चे भी यही करेंगे। ये लोग इंसान को इंसान नहीं समझते। ये अपने आप को एलीट्स कहते हैं। दे आर ब्लडी एलाइट्स, जो कहते हैं ना, समझते हैं ना, पंजाबी में कहते हैं नॉर्थ में, ये एलीट नहीं है, एलाइट है ये। और वो मुझे इतना दुख लगा कि वो सोल्जर बता रहा है कि यहाँ से निकला पत्थर, वहां से गिरा, वो उसके बाद काट के अपनी शुरू हो गया बीच में, है ना? बिल्कुल, उसके बाद काट दी बेचारी की। इसीलिए तो मैं बोल रहा था कि इसको नहीं दिखाना है, कमीना है, बहुत कमीना आदमी है। नहीं दादा, अच्छा दिखाया, लोगों को पता चले कि शेखर गुप्ता है क्या। अरे साहब, इसने जनरल वीके सिंह का सत्यानाश कर दिया था। बोलता था आर्मी जो है कू करने जा रही है। वो बेचारा टैक्टिकल मूव कर रहे थे, उनको बोलता है कि आर्मी कू करने जा रही है। पूरा आर्टिकल लिख दिया था उसमें। हाँ, कोई न्यूज़ थी, ठीक है। और एक TSD फॉर्म किया गया था, टेक्निकल सर्विसेज डिवीजन, जनरल वीके सिंह साहब शुरू किए थे। उसका जो कर्नल थे उनको भी निकाला गया फिर, और वो डिवीजन भी बंद कर दिया गया। चलो मेरी कॉल शुरू होती है, आधे घंटे की मैं फिर ज्वाइन करता हूँ, लेकिन मैं सुन रहा हूँ, अभी मैं म्यूट पे हूँ। हल्ला मत करो यार, तुम लोग क्या कर... Actually, this TSD was reporting directly to General VK Singh, bypassing all our officials. इसमें भी जो है पॉलिटिक्स हुई। TSD was reporting directly to General VK Singh. They put all sorts of blame on him. जो कू वाला बता रहे हैं कि आगरा से जो है ट्रूप्स आ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, दिल्ली को घेरा जाएगा। This is the person who created all this trouble. सॉरी, मेरे बीच में फोन आ जाते हैं। नहीं, कोई बात नहीं। और वो यूनिटी बंद करवा दिया पूरा। That was actually operating on the lines of Mossad in top secrecy, and they had built a lot of assets. पूरा खत्म हो गया। Recording document 169. Coups don't happen by making everything public within the military. Colonel Hani Bakshi, उनके head थे, he was reporting directly to the army chief.
क्या दिखा रहे हैं सर? सिर्फ म्यूजिक ही आ रही है सर। ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जनरल वीके सिंह ने इंडिया को मिलिट्री क्या कहते हैं उसको डिक्टेटरशिप बनाने की कोशिश की। Was there a military coup during Dr. Manmohan Singh's time? Somebody imagined a thing like that in the journalistic world, egged on by some people who wanted to tarnish the image of the armed forces, to come up with a absolutely absurd idea like that. Nothing like that. What happened that night in January 16th, 2012? आप बताइए. About a week before that, I'll go back in time and you'll be able to research on that. You had an issue in Maldives where there were all the chances that the president is going to be thrown out and somebody else will take. We had that information in the army. The information was shared at appropriate level, and we were told, no, it is okay, nothing will happen. But when you get information which is more than what is coming to other people, you know what is happening. You know that the person who is coming is not in our favor. He might be showing that he is in our favor. And chances are that if this throat becomes bad, like last time, we probably would have to intervene. 1988. Now, I'd studied 1988. I mean, if we don't study whatever we have done, then we are not worth it. This time we didn't want to be late. Now, if you don't want to be late, you need to prepare your people. So, 2 units were asked so that we could time them, and those are bad days, fog. Now, if I told them, come to Hindon, the game is up. Which is the next best place? Yes, Republic Day parade is taking place. They can come to Delhi. We would get the timings. Everything was done, and we were taking timings of these people, of one unit moving from Hisar and the other unit moving from Agra. That is all. There was nothing involved. I mean, coups don't happen by making everything public within the military also. Didn't you take anybody on board, like when you did it, like the Raksha Mantri? Raksha Mantri maybe, or anybody else? Like, for what? For doing this kind of an exercise? You didn't think that iska repercussions hoga? Firstly, who knows who's going to give an order for things to move? We had the information. The NSC knew about it. I'd shared the information that this is what is likely to happen in Maldives. They said, we will see if it happens. Now, will you leave it as a professional? I'm not talking as a professional. Will you leave it? We will see at that time. Would you put your troops at risk to say, अरे तब देखेंगे?
दादा इसको पढ़ो, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, बच्चे लोग मतलब पढ़ो इसको, मैं थोड़ा बच्चे हल्ला कर रहे हैं यहाँ पे, इसको पढ़ो तो। जी थैंक यू सर। Major Shatan Singh and the Battle of Rezangla, how 120 Indian Army soldiers manifested the phrase "last time, last round." 60 years after the battle, the story, the truth, and the permanence of unfathomable sacrifice, where the Indian men in uniform were confronted with overwhelming odds, continues to inspire us. This is an article of 1st of December 1922. Among the many great stories of heroic bravery for India on the front line, the Battle of Rezangla figures prominently. The Indian Army's gallantry and fortitude at the Battle of Rezangla during the 1962 war with China is a goosebump-raising story of unimaginable bravery. Major Shatan Singh, Paramveer Chakra of the 13th Kumaon Regiment, was a great Indian hero and the sheer embodiment of valor and patriotism, perished in the battle, but his legacy lives on in the hearts of Indians who will be eternally grateful for his bravery. 60 years after the battle, the story, the truth, and the permanence of unfathomable sacrifice, where the Indian men in uniform were confronted with overwhelming odds, continues to inspire us. It is scarcely believable that such brave men were ever born and lived amongst us. When we talk about the Rezangla battle, the name of Major Shatan Singh, Paramveer Chakra, who symbolized bravery and courage, is the first name that comes to mind. Today is Major Shatan Singh's 98th birthday, and a good time to remember this great son of India. Birth and early years. Shatan Singh Bhatti was born on the 1st of December 1924 in Banasar village of Jodhpur district in Rajasthan to a Rajput family of the Bhatti clan. His father was Lieutenant Colonel M. Singh. Singh completed his secondary education at Jodhpur's Chopasni Senior Secondary School. He was well known in school for his football prowess. Singh attended Gaston College after finishing high school in 1943 and graduated in 1947. Shaitan Singh joined the Jodhpur State Forces as an officer on 1st of August 1949. He was assigned to the Kumaon Regiment when Jodhpur was merged into India after independence. On 25th of November 1955, he was promoted to the rank of captain and participated in operations in Naga Hills as well as the Indian takeover of Goa in 1961. He was subsequently elevated to the rank of major on 11th of June 1962. On, on 20th of October 1962, China launched a full-fledged military attack on India. India sustained substantial losses along the Ladakh border in the days that followed. The Chinese had overrun border checkpoints from the Daulat Beg Oldie to Damchok in their initial attack on Indian forces in October. Indian forces were preventing the Chinese from crossing the Spangur Gap, a 2-kilometer long opening in the Kailash range south of the Pangong Lake and moving into Chushul. Rezangla is located around 11 kilometers south of the Spangur Gap. The formation which guards the southern gates to the Chushul Valley is situated at an elevation of around 5,500 meters. मैप में दिखा रहा था
Tangur Fort, Tangur Gap, Dezangla War Memorial, Dezangla नीचे, Rechanla के नीचे, Rezangla. Kyushu Loop. The Chinese might could have cut off the route that connected Kyushu and the areas south of it to Leh if they took control of Rezangla, a road that was finished just before the war. Kyushu's defense was under the command of the Indian Army's 114 Infantry Brigade, which was operating without a battalion. An infantry brigade typically consists of 3 battalions. However, the 114th Brigade only had the 1/8 Gurkha Rifles and the 5th Yard Regiment. The 13th Kumaon Regiment was moved from Baramulla to support the 114th Brigade when the threat to Chisul was ascertained. The 13th Kumaon Battalion, which reached Leh on October 2nd, 1962, was undergoing acclimatization, was given the task of defending the area south of the Spangor Gap by the 114th Infantry Brigade, Charlie Company of 13th Kumaon Regiment. The weather was perilous, with a chilly and piercing wind and tough terrain. Another disadvantage India had was that it was inaccessible to Indian artillery, owing to an intervening feature requiring soldiers to go without the protective cover of the artillery cannons. The other 13 Kumaon companies held Gun Hill, Gurung Hill, and Magar Hill. Rezangla, a 19-kilometer pass on the southern approach to Trishul, was assigned to Charlie Company under Major Shaitan Singh. Rezangla was all rock, terribly cold with bone-chilling winds, and the men did not have the time to acclimatize to the conditions. Charlie Company was unprotected, unsupported, and all on its own. The Chinese army attacked the 7th and the 8th platoons in the early hours of November 18th. The Indians responded with a fierce response to the Chinese aggression at 5:00 hours. The reaction was so fierce that hundreds of Chinese were killed, and the Chinese initial wave was crushed. At 5:40 hours, Charlie Company came under heavy artillery and mortar shelling, and 350 Chinese attacked the 9th Platoon under cover of this fire. True to their instructions, the platoon delayed its fire until the very end. The 9th Platoon opened fire with all their guns when the Chinese were only 90 meters away. Hundreds of Chinese perished in the face of this onslaught from India. For the next round of strikes, the Chinese deployed recoilless guns to the Charlie Company's wings and began relentlessly hitting Indian positions with 75 mm and 57 mm bombs, as well as 132 mm rockets. As visibility increased after dawn, the Chinese were also spotted deploying a medium machine gun and putting it 600 yards away from the Indian position. Chinese soldiers quickly began hitting Indian positions in the area with mortars and RCL guns, recoilless guns. Major Shaitan Singh moved from platoon to platoon, shooting at the enemy and encouraging his troops to continue to fight despite the significant threat to his life. He battled like a man possessed, utterly unconcerned about his own safety. The incredibly high rate of casualties could not be sustained by the Chinese, and they altered their strategy. The 9th Platoon was placed under MMG fire, while 400 Chinese attacked the 8th Platoon from behind. The platoon's barbed wire fence halted the onslaught. At the same time, a highly equipped assault party of 120 Chinese struck the 7th Platoon from behind. The 7th Platoon fired mortars and rifles in response. Both sides suffered a high number of casualties in the subsequent battles. The strength of the 7th and the 8th platoons had been badly diminished by this point. When the Chinese attacked the 7th platoon again, Indian men jumped out and confronted the Chinese in a hand-to-hand battle. The Chinese arrived with reinforcements, and Charlie Company's entire 7th and 8th platoons were decimated with no survivors. The strength of the 9th platoon was also badly reduced
and ran out of supplies. As a result, the survivors used their bare hands to fight the fully armed Chinese. Major Shaitan Singh moved from bunker to bunker, motivating his soldiers and leading from the front. During the conflict, he was seriously wounded by MMG fire. During the evacuation, the Chinese opened fire on him and the two men escorting him. He ordered his men to leave with his weapon and go to the battalion headquarters since he did not want them to be killed in this situation. I want you to leave me here and go to the battalion headquarters. Report to the commanding officer how bravely your company fought. Go fast, save yourself. The enemy can come here anytime, he said, according to Kuldeep Yadav in the book The Battle of Rezangla. Finally, after helping the company commander to rest against a boulder, the Jawans reluctantly left. By now, Major Shaitan Singh had given his personal pistol to Sepoy Manchand of Platoon 9, who was with them, to deposit it with the battalion quartermaster so that it would not fall into the enemy's hands, Yadav writes. Charlie Company 30 withstood 7 Chinese attacks until every man of the company sacrificed their life in the battle. The frozen remains of the Indian troops were discovered in February 1963 by a Ladakhi shepherd who arrived at Rezangla. The Indian army spotted Shaitan Singh's body 3 months later at the exact location where the soldiers had left him. Major Shaitan Singh's frozen body was discovered against a boulder where his troops had left him. Many of the troops had perished while holding the rifles. There was no undamaged bunker in the Charlie Company area. The search party of the Indian Army, which went to the location, discovered 759 bullet holes in the shield of one of the bunkers. One of the soldiers was shot 47 times. In the attempt to seize Rezangla, 1,300 Chinese soldiers were killed, 114 Indian troops died out of a total of 120. Major Shaitan Singh's body was transported to Jodhpur the next day after it was discovered at Rezangla. He was posthumously bestowed India's highest gallantry medal, the Paramveer Chakra, for exceptional valor and heroism beyond the line of duty. In addition, the company received 8 Veer Chakras and 4 Sena medals for extraordinary courage. The Charlie Company was afterwards named Rezangla Company. Today, a memorial honors the soldiers of Charlie Company who fell in the battle. It reads, "And how can man die better than facing fearful odds from the ashes of their fathers and the temples of the gods?" Major General Ian Cardozo writes in his book Paramveer, Heroes in Battle, when Rezangla was later revisited, dead Jawans were found in the trenches, still holding on to their weapons. Every single man of this company was found dead in his trench, with several bullets or splinter wounds. The 2-inch mortar man died with a bomb still in his hand. The medical orderly had a syringe and a bandage in his hands when the Chinese bullet hit him. Of the 1,000 mortar bombs with the defenders, all but 7 had been fired, and the rest were ready to be fired when the mortar section was overrun. The phrase "last man, last round" finds its manifestation in the Battle of Rezangla. As Major Gaurav Arya writes, at minus 30 degrees Celsius, Ahirs from Haryana, headed by Major Shaitan Singh Bhati of Jodhpur, fought for Naam Namak Nishan. It would be fair to say that the rugged mountains never witnessed such tenacity and such bravery before, and since, on the very first day of December in 1924, was born Shaitan Singh, the man who never learned to surrender, to give up for Mother India, as he knew sacrifice, not defeat. हाँ जी, बिल्कुल ठीक कहा। जो सबसे बड़ा ब्लंडर किया कि 1962 के बाद कैलाश पर्वत और मानसरोवर, आपको पता है कि इंडिया के 1.4 140 करोड़ जो लोग हैं, उनमें कितने लोग भगवान शिवा को मानते हैं, उनकी उनका एक्सेस ही नहीं है। पहले तो तिब्बत और नेपाल अलाउ करते थे,
अब तो ये साल में 200 आदमी 400 आदमी चाइना अलाउ करता है। और 1962 से लेकर अब मैं तो फिर भी मुझे नहीं फर्क पड़ता, पर मेजोरिटी ऑफ इंडिया के लोग, उनकी आखिरी ख्वाहिश ये होती है कि हम मानसरोवर पे जाएं, डुबकी लगाएं, या हम कैलाश पर्वत पे देख के आए। नोबडी कैन फुलफिल दैट। दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट 1962 ब्लंडर, क्या नहीं? अच्छा, लोग कहानी मतलब ऐसे ही फैलाते होंगे कि अभी भी साधु लोग जाते हैं वहाँ, पता नहीं। साधु लोग अलाउड है? उन्हें वीजा लेना पड़ता है? कैसे जाते हैं? अच्छा, मुझे लगता है कोई 5000 वीजा अलाउ करता है चाइना एवरी ईयर। कोई लिमिट है मैक्सिमम, और फिर उनका मेडिकल होता है, दिल्ली से कहीं से मेडिकल होता है, चेक करते हैं कि इन्हें ऊपर जाके कुछ प्रॉब्लम ना हो। जो मेडिकल वगैरह करते हैं वो भी उनसे मिले हुए हैं। हाँ, लेकिन ब्रीदिंग देयर इज डिफिकल्ट। ट्रेडिशनल तो राउट यही था ना, कि जो हिमाचल हिमाचल से ऊपर, उत्तराखंड से ऊपर, जहाँ से गंगा गंगा नदी का सोर्स है, गंगोत्री से ऊपर जो हमारे साधु संत है वो ऊपर गंगोत्री से ऊपर चलते जाते, चलते चलते थोड़ा सा साउथ, थोड़ा सा राइट पे जाओ तो कैलाश पर्वत आ जाता है। उसके ऊपर, उसके पहले पहले लेक मानसरोवर आती, फिर ये कैलाश पर्वत आता है। और वो इधर उत्तराखंड से ही है सीधा ऊपर, 70-80 किलोमीटर, जहाँ इंडिया का बॉर्डर खत्म होता है वहां से आगे तिब्बत में था। और कभी भी तिब्बत तिब्बत के दलाई लामा कभी किसी ने रोका नहीं था किसी को। और ये हमारे नेहरू साहब हैं कि वहां पे तो ग्रास भी नहीं होता, ब्लेड घास भी नहीं होता, तो इसलिए हमें जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ा जो नेचुरल वंडर है कि जहाँ पे मानसरोवर की झील है, लेक है, सरोवर है, उसके साथ जो मानसरोवर जो सरोवर है वो मीठे पानी का है, बिल्कुल उसके साथ जो सरोवर है रक्षथाल, वो समुंदर के नमक वाले पानी का है। हाँ, ये मैं सुना हूँ। ये ऐसा फैक्ट आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा कि दो लेक्स, दो लेक हैं, दोनों साथ साथ में हैं। साथ साथ हैं, एकदम करेक्ट। हाँ, एक खारे पानी की लेक जिसमें मीठा पानी नहीं है, और एक मीठा पानी की लेक। और मीठे पानी की लेक में इंडियन हमारी संस्कृति में कहा जाता है कि सब मानसरोवर का चक्कर लगाए, इसकी परिक्रमा करें तो आपके मोक्ष हो जाता है। और फिर कहते हैं कि कैलाश पर्वत का आप चक्कर लगाए 7 बार कि 8 बार, कुछ ऐसा कुछ है, तो फिर आपको मोक्ष हो जाता है। तो आई मीन, चलो फिर भी वट एवर द केस, ऐसी चीजें कभी किसी ने सोची भी नहीं, कभी किसी ने पॉइंट भी नहीं रेज किया। आई मीन, सोचने वाली बात है कि नहीं? बिल्कुल। हिस्टोरिकली तो मानसरोवर तो सभी वेदों में है, सभी ग्रंथों में है, रामायण में है, महाभारत का मुझे पता नहीं। और पता ही होगा सभी को, हिरण्मय तुम्हें पता होगा, भारती जी को, हाँ, सबको पता ही है। और ये 1962 का सबसे बड़ा ब्लंडर है। कितने हजारों सालों से जो हमारी जो संस्कृति है उससे हमें वंचित रख दिया। नोबडी कैन गो देयर, तुम जा नहीं सकते वहां। एक साल में आपको कितने वीजे मिलते हैं पता नहीं, और आपको साइन करना पड़ता है, आपको कि अरुणाचल चाइना का पार्ट है, और पता नहीं क्या कहाँ का, ऐसे इस तरह की चीजें भी चाइनीज गवर्नमेंट करवाती है आपको। अरे नेहरू एथिस्ट था, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। नौटंकी बाद में किया कि उनके एसेस जो है चारों तरफ फैलाए हुए ऑल ओवर इंडिया। अच्छा एम सर, हमारे जो एयरफोर्स थे, क्या वो वॉर रेडी थे 1962 में? मुझे मालूम नहीं सर, मैं उस समय सर्विस में नहीं था एयरफोर्स में। अच्छा, हाँ, हमारे एयरफोर्स तो टोटली वॉर रेडी थे। इंडिया के एयरफोर्स के जितने बात करी, हमारे कमांडर्स साथ एक एडवांटेज था। देखिए, चाइना वालों को उस समय जिस तरह के प्लेन्स थे ना, दे वर नॉट फुली प्रेशराइज्ड।
और ऑक्सीजन का प्रॉब्लम था। लेकिन हमारे यहाँ तो है, वी हैड टू गो ओवर प्लेन लैंड ना, वहाँ जाके आराम से बॉम्बिंग कर देते। इन लोग जैसे एडवांस करते, हम जाके बॉम्बिंग कर देते। हाँ उनके जी, लिए हिरणमय दिक्कत था देखिए, to go to a great height and come all the way to India. उनका जब एयरफील्ड एक भी काफी दूर था, अभी भी दूर दूर है, थे, हाँ। वहाँ जगह जब ही नहीं है ना। जब प्लेन उड़ता है ना, जो जमीन से उड़ता है, समुंदर के नीचे, समुंदर की सतह से जब प्लेन ऊपर उड़ता है, तो जो जो एयर प्रेशर तब होता है, उसमें आसानी होती है अगर वो समुंदर के पास हो। एक बार वो बिल्कुल हवा में चला जाए तो उसके कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस वजह से, इस कारण से इंडिया के जितने भी एयरप्लेन्स हैं वो एकदम से लद्दाख पहुंच सकते थे, और आराम चाइना से को आराम बहुत दूर से आना पड़ता है। और फिर जो पहाड़ भी लद्दाख तो ऑलरेडी 16,000 फुट पे है, अगर वहां से आप प्लेन उड़ाएंगे तो प्लेन को तो एक तो बहुत लंबा रनवे चाहिए, और उसे बहुत ज्यादा फ्यूल चाहिए, तेल चाहिए फ्यूल उड़ने चाहिए, के लिए, ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। हाँ, पायलट को इंडिया में ऐसी ऑक्सीजन इशू नहीं चाहिए। था। तो जो एयरफोर्स को नहीं यूज किया, तो ये एडवांटेज चाइना को उन्होंने एक हाथ अपना छोड़ पीछे दिया, बांध के आप लड़ रहे हैं। handed over the entire territory on a platter. राइट। अभी भी राइट नाउ, इवन इवन 2023, द बिगेस्ट एडवांटेज इंडिया हैज इज टू यूज एयरफोर्स। अभी भी, क्योंकि हमारे प्लेन तो पूरा का पूरा पेलोड लेके, पूरे के पूरे हथियार लेके ऊपर उड़ जाएंगे। जो चाइनीज प्लेन्स हैं, 30 to 40% ही उनके उनका ऊपर लेके उड़ सकते हैं। एक बार उनको प्रॉब्लम ये होगी, एक बार वो पूरे के पूरे बॉम्ब्स वगैरह लेके, मिसाइल लेके ऊपर उड़ जाए, तो उन्हें एयर फुल करना पड़ेगा। उनके ऊपर आगे कोई फ्यूल, उनको एयर टू एयर फ्यूल करेगा। लेकिन जी हाँ। फ्यूल स्टेशन भी नजदीक नहीं है, हमारे यहाँ सुविधा है। ऑल हाँ अलोंग जी, द बॉर्डर वी हैव लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। हम आराम से रिफ्यूल करेंगे, क्योंकि एयरफील्ड तो नजदीक है, तेजपुर में है और बहुत जगह है उधर, इस साइड में भी है। सारे सारे के सारे, पूरा पूरा इवन दिल्ली, दिल्ली, लखनऊ, सब दिल्ली, सब लखनऊ, कलकत्ता, पंजाब में वाराणसी सारे, है, सब। अब तो वाराणसी है हासीमारा में भी है। हाँ, ये सारे के सारे जितने भी हिमालय के साथ साथ हैं एयरफेस, ये 200 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं है, 300 किलोमीटर होंगे। हाँ जी। हाँ, इसे चाइनीज कहते हैं कैरिंग, क्या कहते हैं, कंगरी बोकी पीक। ये कैलाश पर्वत है। जी जी जी। अच्छा अच्छा, हाँ, कैलाश पर्वत जैसा दिख रहा है। हाँ जी, कैलाश पर्वत को चाइनीज ने अपना नाम दे दिया। अच्छा, ये आपने कहा था वहां पे हिमालय, सॉरी, मतलब चाइना में, चाइना मतलब तिब्बत में कहीं पे मीठा पानी और खारा पानी एक साथ मिलता है, तो आपने हाँ कहाँ पे जी, मिला बोला था? जो ये पर्वत दिखा रहे हैं ना, ये पर्वत से थोड़ी सी देर पहले थोड़ी दो सी दो दूर है, झील हाँ। है। हाँ, उसके पहले है। अगर आप इंडिया से जाएं या नेपाल से जाएं, नेपाल से जाएं तो 40-50 किलोमीटर होगा। उत्तराखंड से जाएं तो 80-90 किलोमीटर होगा। तो अच्छा अच्छा। दो दो पहले दो झील मिलेंगी। लेफ्ट हैंड साइड पे जो पहली झील मिलेगी वो है रक्षसाल झील, और उसके साथ दूसरी झील है, उसे कहते हैं मानसरोवर। जो रक्षसाल झील है ना, वो कहते हैं कि ये अ, रावण रावण ने जहाँ यहाँ पे तपस्या की थी, तो तो तपस्या कर करके वो रोने लग गया था, तो उसके आंसुओं से बनी हुई है, इसलिए वो झील खारी है। खारी है अच्छा मतलब अच्छा नमक वाली है। और उससे अच्छा बिल्कुल साथ जो मानसरोवर है, वो बुरी मीठी मीठी झील, मीठे पानी है। अच्छा मानसरोवर झील, मानसरोवर लेक के साथ ही रक्षस्थाल कहते हैं, जो राक्षस के थाल राक्षस ताल यानी ही रक्त राक्षस। ताल हो गया। राइट, हाँ, जी सर, जी सर। जो राक्षस का सरोवर है। और ये दोनों दोनों एकदम बगल में ही है। बगल में है, और कैलाश पर्वत से 10-15 किलोमीटर हम इंडिया की तरफ है। अगर आप इंडिया से जाएं तो पहले ये दोनों आएंगी, उसके बाद कैलाश पर्वत आएगा। और हैरानी की बात है कि चाइना का वहां पे कुछ लेना देना नहीं है। तिब्बत के जो बुद्धिस्ट हैं वो भी मानते हैं, जैन भी मानते हैं, हिंदू भी हाँ, मानते सब हैं, सब सिख भी मानते मानते हैं, हैं, सब मानते हैं। सब मानते हैं। और हजारों सालों से मान रहे हैं, हजारों सालों से, जी कुछ जी पता ही जी। नहीं। जी हाँ, जी इंडिया हाँ। में तो साउथ से लेके नॉर्थ तक, ईस्ट से लेके वेस्ट तक हर कोई भगवान शिव को मानता है।
जो जिसे कि हम कहते हैं कि भगवान शिव का घर है, वो वहां को जा नहीं सकता। ऊपर कोई चढ़ता नहीं है। मैं चढ़ तो सकता, हाँ जी। मतलब मान्यता यह है कि जो कैलाश पर्वत है इसके परिक्रमा करनी चाहिए जमीन पे नीचे नीचे। जो लोग इंडिया से जाते हैं ना, 5-2-4 हजार जितने भी वीजा मिलते हैं, जो जो जाते हैं यात्रा पे, वो बस मानसरोवर की परिक्रमा करनी आसान है क्योंकि वो नीचे है, पर कैलाश पर्वत की परिक्रमा करनी बहुत मुश्किल है। बस इसकी परिक्रमा करके आ जाते हैं। जी सर। पर वहां पे जाने से उसका पहले नाम आपको पूरा, क्या लिखा है? कोंगड़ी बोक पीक। हाँ इन्होंने अपना नाम ही रख लिया। ये ब्रह्मपुत्र नदी का भी तो चाइनीज नाम है ना। राइट, हाँ जी। शैंग को क्या नाम है, याद नहीं आ रहा मुझे, स्कूल में पढ़ा था मैं। शैंग को क्या नाम है, वैसा ही कुछ है। आई मीन इमेजिन, अगर हम सोच रहे हैं कि ऐसे ऐसे ब्लंडर हुए हैं और अभी भी हो रहे हैं। आई मीन अभी भी हो रहे हैं ना। अभी भी हो रहा है। सबसे बड़ा चीज ये है कि दबाया जाता है सबको। हाँ जी। आई मीन कम से कम जैसे करतारपुर में कॉरिडोर बना है इंडिया, वहां तक कॉरिडोर तो बना सकते हैं। अभी अभी उत्तराखंड से आप जहाँ पे गंगोत्री है, जहाँ पे बद्रीनाथ, भगवान बद्रीनाथ का मंदिर है, जहाँ तक अभी तक जाते हैं लोग, बस से ही जाते हैं। अभी तो कहते सुना मैं गाड़ी भी बन रही है, रेलगाड़ी भी। वहीं से 100-200 किलोमीटर और आगे है कैलाश पर्वत। बद्रीनाथ केदारनाथ से कितनी दूर होगा? 150-200 किलोमीटर और आगे होगा बस। और वो सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है एक तरह से, कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। अब 4 धाम की यात्रा करने तो, एक 4 धाम तो उत्तराखंड में है और एक 4 धाम इंडिया में है। हाँ जी। हाँ, बस यही है कि इससे बड़ा ब्लंडर क्या होगा 1962 की लड़ाई में, आप सोचिए। इंडिया के 100 करोड़ लोगों की आस्था जिसमें है, वो आपने गंवा दिया, उसका एक्सेस गंवा दिया आपने। मतलब कितना जी हाँ। झूठ जो फैलाया जाता है कि चाइनीज आकर ये कर लिए वो कर लिए, तो हम तैयारी नहीं थे उनके साथ बैठने के लिए। मौका मिलता गया, हम छोड़ते गए। अच्छा, हमारा जो मेजर शैतान सिंह थे वो बलिदान हो गए थे क्या सर इस युद्ध टोटली में? लास्ट बुलेट तक अपनी जगह से नहीं हिले थे वो मेजर शैतान सिंह। और उनकी पूरी की पूरी, एक वही नहीं, पूरी की पूरी उनकी जो कंपनी थी, कुमाऊं रेजिमेंट अहिर कंपनी, सबके सब। परमवीर चक्र, जो अच्छा सबसे अच्छा, बड़ा, परमवीर चक्र में बात है। हाँ जी, मेजर शैतान सिंह परमवीर चक्र है उनके पास। चलो, मेरा फोन आ रहा है, मैं बाद में बात करता हूँ। हाँ, 1 मिनट। ओके सर, ओके ओके। जी दादा, जी जी, आ गया वापस। वेलकम। नहीं, मेरा एक प्रश्न था परंतु वो पिछले स्ट्रीम से था, मतलब पार्ट पार्ट 4 से था। वो जो पटेल का जो बिहेवियर जो जम्मू कश्मीर और जूनागढ़ और हैदराबाद से लेके डिफरेंस थी, वो उसका कोई मतलब पटेल ने कोई कारण लिख के गए थे क्या उसका? मतलब उनका कोई डायरी वायरी कुछ ऐसा ऐसा कुछ लिख के गए थे क्या? अब ये तो मालूम नहीं उन्होंने क्या लिखा। जो उनके साथ के लोग हैं उन्होंने जो लिखा वो
दिखाया गया। रेफरेंस तो है ना उसमें, कहाँ से रेफरेंस आता है? या फिर गवर्नमेंट रिकॉर्ड में जब उन्होंने ऑर्डर दिए थे तो उस समय कुछ कारण दिया होगा कि मैंने ये ऑर्डर क्यों दे रहा हूँ। कौन सा ऑर्डर के बारे में बोल रहे हैं? मैं पूछ रहा हूँ कि कौन सा ऑर्डर के बारे में आप बोल रहे हैं? नहीं, वो जम्मू कश्मीर को लेकर थोड़ा सॉफ्ट थे, मतलब नेहरू को ढीले छोड़ दिए थे कि तुम जो चाहे वो करो, उसको संभालो। और ऐसा तो हैदराबाद और कुछ दुमका नहीं, को लेके उनको बहुत बताया स्ट्रिक्ट थे। नहीं कि गया बहुत चीज। इसके ये कोई कारण उन्होंने जब गवर्नमेंट ऑर्डर्स दिए थे तो उसका कोई कारण वारण दिया होगा, इसलिए मैं पूछा। गवर्नमेंट ऑर्डर से नेहरू खुद कंट्रोल कर रहे थे पूरा। कश्मीर का तब मामला तो खुद अपना हाथ में लिए कश्मीर के टाइम पे शायद चल भी नहीं रही हो इनकी, ये भी तो है तो ना। कल हम लोग पढ़े ना, उनकी चलती कहाँ। लेकिन वो बाद में प्रोटेस्ट तो कर सकते थे जब उनको पता चला कि पीठ पीछे क्या हो रहा है। He should have protested or resigned or created a hue and cry regarding the matter so that the people of the nation would have known what was going on. इन सबने दबाने का ही कोशिश की है। अच्छा, एक और बात, ये जो युद्ध हुआ था 1962 का जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध में क्या हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट थे उन्होंने कोई मतलब हमारे अपने पब्लिक से कोई दान मतलब धनराशि के लिए कोई दान मांगा था? पब्लिक कोई राशि मांगा था कि कोई डोनेशन गवर्नमेंट को डोनेशन दो ताकि हम कुछ हथियार खरीद सके, ऐसा कुछ मांगा था क्या? हथियार के लिए तो नहीं मांगे थे, लेकिन वो कुछ दिखता था, मतलब स्टैम्प फ्लैग, इतना मुझे याद है। जो शर्ट पे पिन करते हैं ना, पेपर फ्लैग पिन, जिसको जो देना था वो देते थे। 10 रुपये या 10 रुपये तो नहीं, मतलब 1-2 रुपये लोग देते थे। क्योंकि मुझे ये स्कूल्स जो प्रोफेसर है हम सुब्रमण्यम लोग स्वामी के कलेक्ट बारे में करते थे बहुत। मतलब स्कूल्स उनके जो है स्टेटमेंट ना, से पता चला कि ऐसा मांगा गया था। और हाँ, हमारे स्कूल्स कलेक्ट जो उस करते समय थे। के जो महिलाएं स्कूल थे वो लोग स्टूडेंट्स, अपना कंगन सोने का माला सब ये दान सब कर तो दिए मैं थे नहीं सुना। ये मैं नहीं सुना, लेकिन गवर्नमेंट को। कलेक्शन ड्राइव इन एवरी स्कूल। कहीं सोने का जिक्र कहीं नहीं। वो आईने के टाइम में सिंगापुर में, मतलब वो सब कलेक्ट किया गया था, सोना वगैरह। हाँ हाँ, आईने के टाइम में तो किया था ही। वहाँ के जो जो मद्रासी इंडियन थे सिंगापुर में और सॉरी साउथ ईस्ट एशिया पे थे, उन्होंने बहुत बहुत बड़ा दान दिया था। यहाँ तक कि पंजाबी भी थे, पंजाबियों ने भी दान दिया था। हाँ, दिख रहे हैं। दिख रहा है सर, पूरा दिख रहा रहा है। है। ये किताब का नाम क्या है सर? वही द यादव बैटल की ऑफ बुक, रजेंगला भाई यादव, हाँ हाँ कुलदीप यादव। हाँ हाँ। I have often wondered why I've we often don't wondered more why we don't have more books and films featuring featuring the heroic heroic battle battles. अरे of एक आदमी soldiers। पढ़ो ना। अच्छा, आप ही अरे पढ़ो। हिरौन में एक मिनट यार, हिरौन में बुरा मत मानना, हाँ, जब आपसे कहे ना पढ़ो, आपका पढ़ो। या तो अभी दादा पढ़ रहे हैं तो ना आवाज अच्छा, दो आप पढ़ आवाज रहे आ थे रही कि है। मुझे पता नहीं था वो पढ़ रहे थे या नहीं। नहीं, मेरी बात सुनो, बुरा मत मानना। आपसे जब कहा जाए ना कि हिरौन में आप पढ़ो, तो आप पढ़ना शुरू करो, या ठीक है आप ठीक पूछ है। लो क्या मैं पढ़ूं, थोड़ा डेकोरम बना रहेगा।
ठीक है, ठीक बुरा है मत ठीक है मानना। हाँ, एम दादा आप पढ़िए। Gee, thank you, sir. Oh, word. I've often wondered why we don't have more books and films featuring the heroic battles that our soldiers fought during the 1962 war with China. When I was invited to write a foreword for this book on the Battle of Rezangla, I immediately accepted. I'm delighted to see that the book lays a strong foundation of this epic battle that till now the nation has been deprived of knowing and discussing. The story of the Battle of Rezangla is the stuff legends are made of. 13 Kumao, which is an all-ahead battalion of Kumao Regiment, fought valiantly, transforming a sure-shot debacle into one of the fiercest last stands in the history of the Indian Army, and for that matter, the entire world. The fact that just 120 infantry soldiers succeeded in stopping the largest standing army of the world is testimony to the courage, professionalism, and commitment of these soldiers, who not only refused to move back even an inch, but when the ammunition got over, these brave soldiers jumped out of their trenches and went headlong into the enemy using their bare hands and bayonets. They were so highly motivated and fearless that even the Chinese acknowledged their bravery and valor. 3 months after the war, when the mortal remains of these brave hearts, including their company commander, were found, it was seen that every one of them had taken bullets on their chest. Not one was shot in the back. Brigadier T.N. Rana had this to say about their bravery: "You rarely come across such examples in the annals of military history when braving such heavy odds. The men fought till the last bullet and the last man. Certainly, the Battle of Rezangla is a shining example. Indeed, the odds were heavily against these soldiers. They were hugely outnumbered, outgunned, and outweathered. But each one of them fought like a true hero and proved to the world that determination, grit, and belief are much bigger than any material odds. The story of Rezangla needs to be told to all Indians, particularly the young generation who do not have access to any authentic and realistic story of this amazing saga of valor and courage. Everyone should know the cost that was paid to protect India in 1962. Today, we have not one but three memorials to honor and remember the soldiers who fought this epic battle. There's one near Rezangla itself, one in Rewari, Haryana, and another in Gurgaon, Haryana. As someone who's always led from the front by setting a personal example, it's my great honor to write the foreword for a book that espouses the valor and bravery of the soldiers who defended our motherland in keeping with the highest traditions of the Indian Army. I, the only general officer in the world to have completed the Ironman challenge, have always set my sights higher and pushed the limits of what the body and mind can achieve. In this epic battle, everyone from the company commander, Major Shaitan Singh, to the junior commissioned officers and the brave soldiers, exhibited exemplary mental and physical strength and single-minded love and devotion for the nation, which will inspire Indians for generations to come. Each one of the soldiers of the Charlie Company of the 13th Kumar, from the tall and well-built Lance Naik Singh Ram, who killed enemy soldiers with his bare hands, to Naik Gulab Singh, who jumped on the enemy's MMG, and Naik Ram Kumar, who didn't stop firing the 3-inch mortar even after getting hit by 9 bullets and losing his nose to a shrapnel hit at nerves of steel. I am sanguine that this book will not only remind everyone about the cost of freedom, but also inspire new generations to learn lessons from the bravery of those gallant heroes of the epic Battle of Rezangla. Jai Hind. वाह Number बहुत अच्छा लिखा 21st January 2021 मेजर जनरल विक्रम देव डोगरा रेजिमेंट अति विशिष्ट सेवा मेडल एविएशन एम दादा, मैं जब पहले YouTube पे रिसर्च कर रहा था ना, जी सर
1962 वॉर के कुछ हरियाणा के सोल्जर्स की टेस्टिमनी इंटरव्यूज, उसमें से एक मेरे को बड़ी अच्छी तरह याद है, वही ढूंढ रहा था। उसने कहा हमारा कमांडिंग ऑफिसर सिख था और हम जी सारे जी जाट, हम लेटे हुए थे। वो आया, उसने बोला क्या भांडो, यानी औरतों की तरह लेटा हुआ है। तो कहता मैं खड़ा हुआ, कहता तू मरवाएगा चल। तो कहता है वी मूव फॉरवर्ड। जी हमको ऑर्डर था कि सरेंडर कर दो। उसने कहा कि अगर मैं सरेंडर करके अपने गांव जाऊंगा वो मैं शर्म से मर जाऊंगा। मतलब दिस इज व्हाट द गाय सेड कि यहां मर जाऊंगा, सरेंडर करके पीठ दबा के मैं गांव नहीं जाऊंगा वापस। दिस इज अ सोल्जर फ्रॉम हरियाणा इज सेइंग। इसको पढ़ो वो मैं सर। ढूंढने की कोशिश कर रहा था, वो मिल जाए, दैट्स अ नहीं वेरी नहीं इंटरेस्टिंग नहीं नहीं वीडियो। नहीं नहीं, बंद करता हूँ, इसको बाद में करेंगे कभी। जी जी जी, लेकिन अच्छा है, लैंग्वेज बहुत अच्छा है। 3 घंटे हो गए, बंद करते हैं स्क्रीन को। जी सर। ओके, चलो भाइयों, अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए। ऐसे ही आपको और भी वीडियो लेते आते रहेंगे। शैतान सिंह के बारे में, कुमायूं रेजिमेंट के बारे में हम फिर से बताएंगे किसी और स्ट्रीम में। देखने के लिए धन्यवाद जी, सभी का लाइक कीजिए, धन्यवाद। सब लोग सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले, और कंट्रीब्यूट भी कीजिए। आगे शेयर कीजिए, ये धन्यवाद। आगे शेयर भी कीजिए, करें। अगले पार्ट के साथ ये जल्दी बुक आपके मैंने पास। अभी खरीदी 300 रुपए की किंडल अच्छा में। किए सर, अच्छा किए। देखिए दिस इज अ गुड हैबिट आल्सो। थैंक्स टू बाजवा साहब, बाजवा साहब ने मेरे को शैतान सिंह का नाम लिया। तो एक हमारा टैंकर है, आल टैंकर है इसका, क्या बोलते हैं, शिपिंग एससीआई का, उसका नाम मेजर शैतान सिंह है। वो अच्छा अच्छा, हाँ, वो तेल लेकर के आता है ना, यहाँ पर खड़ा होता है, हाँ अपना जी गिर गांव में खड़ा होता है वहां पर। तो मेरे को थोड़ा सा क्यूरियोसिटी हुई, मैंने कहा इसके बारे में पढ़ करके पब्लिक को सुनाता हूँ, मेजर शैतान सिंह भाटी के बारे में। ठीक है, चलो भाई, सब लोगों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, वंदे भारत मातरम। माता की जय। भारत माता जय की हिंद, जय। वंदे सबको मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय, वंदे मातरम।